big market, bigger than the new car market. In that market, when you go and try to buy a second-hand car, the problem with the second-hand car is you don't know what it has been through, right? So in their language, in their slang, a bad second-hand car is called a lemon, and a good car is called a peach, right? So this professor, he basically came up with a theory and did a proper research paper. He was a professor of economics, by the way, so it's an economics paper, where he said that in a car market, in the absence of true information symmetry, like what, if I'm the owner of the car, I'm selling the car, I know what my car has been through. If there was an accident, I would know. If it went through a water logging area and some water got into engine, I know about it. But you are the buyer, and there's no way you would know about it unless I tell you. Of course, there are other ways to find out, but right now, let's say this is the information asymmetry. I know more about what I'm selling than the person trying to buy it. Right. So in that case, what happens in a market? The price in that market sets to an average level, right? Some of the cars are good, the peaches, some of the cars are bad, the lemons. So the price will basically set at an average price, which for a lemon, it is still a good price because it's a bad car, right? And a bad car getting an average price, very good. But for a peach, for a good car, it's a bad price. So then what happens? These good cars actually get out of the market because they are not getting a right price, and the market will be full of lemons, the bad car, because average price is still good for them, right? So that is what he called the theory of lemons. And it doesn't end there. So how do you address this problem? You will never get the right price for your good car, right? So that's where this professor suggested a concept of signaling. So you have to signal to the market that your car or what you are offering in the market is superior to the average stuff available. How do you do that signaling? You guys must have already heard of, say, a Maruti True Value or this Mahindra First Choice or this certified refurbished cars, where somebody of repute, say Maruti Suzuki Limited, Mahindra and Mahindra, would inspect that car, certify it, maybe add some 1-year warranty to it, and say, okay, this is a good car, I'm certifying. That is the signaling part of it. And you can charge a premium for it. Now that it is certified, there is some assurance attached to it, you can probably charge a higher price for it. That is called signaling. Now, this Premier Institute business is nothing but that, right? I mean, when you get into an institute which has some reputation in the market, it is the signaling effect of that, you being graduate of that institute, that matters more than anything else. MBA, at the end of the day, you go to an institute which is ranked, say, 1, or an institute which is ranked 500, the syllabus is the same, right? I mean, they'll teach you the same stuff, they'll ask you to buy the same books, you will go through the same theory. Same applies for engineering, same applies for any other degree, right? The value of that premier institute, and there's no definition for that, right? I mean, everything is relative, but that value is that signaling effect. Once you graduate out of a college which has some reputation in the market, what happens is the market, and in your case, what are you offering? You are offering your skills as an employee. And who is the seller? The seller is the person who is trying to give you a job, a company that is trying to give you a job. This institute business, basically, it signals to the market that, okay, you went to this institute, you must be better than the people who could not get into that institute. That is your signaling. That is your certification that you have gotten already. Everybody knows you studied the same thing which somebody else studied in an institute 500 ranks lower than your institute. But what did you get? You got that signaling effect because that institute has that reputation. And that's where it is worthwhile to take time out. If you couldn't do very well in the entrance exams this year, probably just find a job, work for a year, wait it out. Next year, try again to get into an institute which gives you that signaling effect. So that's largely how I would think about it. And do not restrict your options to a very limited set of this thing, that I'll only go to IIM Ahmedabad, otherwise I'm not doing my MBA. Then, in a country of our size, Ahmedabad takes maybe 350 students every year. So yeah, that might be a counterproductive move. But make a list
of institutes based on your interests, your capabilities, where you think you would be able to perform in that CAT exam or whatever entrance exam, and make a list. Make a nice 6, 7, 8, 10 institute list. Only focus on those. And a very important part, once that entrance exam bit is over, is also the interview. Some of the institutes do a GD, a group discussion rounds. They will probably ask you to write a letter or an essay or a summary, something like that, just to judge your writing skills. That is probably, kind of maybe next stage, right? You shouldn't worry about that upfront. That's more that comes with practice on your diction, practice speaking in those kind of settings. You can go through interviews and all. So that, I would say, shouldn't be something that you spend time on even before you have cleared an exam. So that can wait. So to summarize, what matters is the image or the premierness of the institute matters. So make a list for yourself and do not compromise outside that list. Go to those institutes only. Then accordingly prepare for those entrance exams which are accepted in those institutes. The preparation, very simply, I would say the math and reasoning part is all about practice as much as you can, gain skill, gain speed, gain accuracy. On English, I would say just read serious non-fiction stuff. It can be opinion pieces in the newspapers, non-fiction books written on various topics by authors. Do that, and yeah, that's about it. I think it's now, with a lot of institutes which are good, your options are fairly large. All the best is what I'll say at the end, and now for last 15-20 minutes we can take questions if you guys have anything to ask me. So to the participant, in case they have got any doubts, these things, our participants are our faculty members from various institutes and students. Okay. Yes. So the faculty members, they can also put some questions in case they want further clarifications how to, appear for this type of examinations. So one question is, sir, can you get me? Mm-hmm. Yeah, I can hear you. What teaching pedagogy is normally followed in IIMs? Say you are from Bangalore, I am Bangalore. So that our faculty member can take some tips from that, and they can also start using those tips to our students at the beginning of their sessions, so that by the time they complete their graduations, they are ready to crack these examinations. In the teaching methodology, what step they should follow in the day-to-day classwork? Say faculty is taking a class of the students. So what different type of teaching methodology they should follow, which can be useful on the part of the students and the more understanding goals? Or what type of teaching is followed there in IIMs, say in Bangalore? Yeah, sure. Yeah, so one fairly standard methodology, and which I had not experienced, at least in the undergraduate studies that I went through, is the case study method. And it's very popular in the MBA colleges. I can talk about IIM Bangalore, and most of our lectures were case study based. What happens there is that the topic to be covered for that lecture, there's a case study from a real life case. For example, if it is about say quality management, there will be a case study of a Ford car which Ford launched some years ago. There was a problem with the car's fuel system,
and how did they manage that? Did they have to call back those cars, and what did they do on the factory floor to address that problem? That case study will be shared with the students upfront. What we are supposed to do is we read through that, come to the class and have a discussion. Okay, what do we understand from all this? What is the problem at hand? Did the company handle it well, and how would we handle in if we were in that place? And we start with that discussion. It is a case study method, and then the lecturer, the professor, steps in and introduces us to the concepts, the theories, the ways and methods of doing this. If there's a concept already in operations management, if there is a method of modeling all this, he will basically take us through, introduce us to those theoretical aspects of thing, and on the go, real time, we will try to apply those to the case at hand. So that's something which I found really interesting, and it may be worthwhile using this methodology depending on the subject and the suitability and also availability of the case. But this case study method is really really something that faculty members should probably try and apply in their teaching methods. Case study is given to the students in advance for study, and out of that case study, the concerned faculty member picks out certain theoretical concept, and those theoretical concepts are linked with the practical aspects. That is how? Yes, 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 yes. I think in most of the courses it goes like that. In most of the subjects, say in HR, marketing, operations, productions, finance. Yes, yeah. Actually, especially in IIM Bangalore, that is the only method. So, as in, there has to be a case study. So, it is kind of a compulsory thing. So, what we receive at I'm sure it hasn't changed. I did this in 2011-12, but it is largely the same. When at the beginning of the semester, when you receive your books, you also receive a set of the case studies for every session, and that is kind of the standard thing. Some of the subjects which are say there is some subjects on corporate law and all, there it is more theoretical than case based, but largely otherwise it is every lecture will have a case study linked to it. That's the way it is. Sir, just out of the contest, but what has been the reason of IIM Bangalore? It has taken a quite, forward leap than many of the IIMs. What is so peculiar about the IIM Bangalore? During the last 1-2 years, I'm watching, I'm seeing that IIM Bangalore is quite ahead of many of IIMs. Except I think maybe the IIM Calcutta or this thing, Ahmedabad. Yeah, I think it so ranks third and yeah. yeah, so Yeah. Yes. Yes. Continue, sir. yeah. Yes. So what happens is, the since these institutes are autonomous institutes, and the chairman, while the appointment is kind of recommended by the UGC, it is still an autonomous institute, and it decides on its own strategy and its own future path independently. And it helps that they charge the students a bomb, right, 25 lakh rupee fee. They are not short on money. So IIM Bangalore specifically, what they have done is every IIM has some areas of focus where they invest a lot in research. When I say invest, they hire PhD students, pay them a very good stipend, try to have the best PhD students because of the brand image of the institute, the stipend they pay, they provide accommodation in the institute itself, and try to attract talent which is research oriented. And then they do research in areas which are beyond typical MBA mindset. Okay, I'll go there, get a good placement, get a job, that's about it. So trying to build that research capability in the institute has helped IIM Bangalore's image a lot, especially in the international rankings. Apart from that, IIM Bangalore is actually very well,
the reason IIM Bangalore was set up, it was early 60s, even Jawaharlal Nehru's time. That time MBA wasn't a big thing. It was set up for the civil servants to learn the aspects of management. Continuing that, IIM Bangalore still has a very strong program in public policy management. So it is called Postgraduate Diploma in PPM, Public Policy Management. And civil servants actually come in, serving IAS officers nominated by the government or their respective department, and do that diploma in IIM Bangalore. That public policy department is very strong. Similarly, because it is in Bangalore, it runs a program specifically for the software professionals. So people who are in the software industry, engineers, few years already in a company, there's a program specifically for them to teach them various aspects of management, which will help them in their career, including because, as you know, most of the clients for our Indian IT industry are foreign clients. The clients are in the Americas, in the European countries. So they are taught things which help them do more business development, more sales. Somebody who has done coding for 10 years, how do you make him your salesperson now? How will he go to America, get you 2 more clients? He can't just go and teach, he can't just go based on his engineering skills. He has to have that skill as well. So that program, it is called PGSCM, Postgraduate Program in Software Enterprise Management. Very good program, very popular, and that also gives IIM Bangalore the reputation of being more market oriented, and helps with the rankings that we keep seeing in the in media. Yeah, so that's what I have noticed, and it is very connected with its alumni network. So I, for example, attend alumni meeting whichever city I am every year. So what happens is they basically announce, we have group email ID. They announce, okay, for this city, the meeting of IIM Bangalore alumni are on this date. And whoever is in that city tries their best to attend that. And I have seen people who did their IIM degree 30 years ago to people who graduated just this year, maybe some people from my batch, my senior. So it's a very tightly knit network, and we are always aware what the institute is trying to do. We try to help financially if they are trying to set up something very specific. For example, 3-4 years ago, there was a sports complex that was developed in IIM Bangalore with the Olympic size swimming pool and indoor tennis courts, etc. The expense for that came completely from the alumni donations. It was floated on the alumni boards. Whoever could contribute whatever amount they contributed, and the institute actually got it for free virtually. So that strong alumni network and the help and the support that comes from that strong network is also very helpful. So largely a lot of things, I would say the legacy helps. 45 years of being in this business, being already recognized as premier, and the focus on research, public policy sort of helps IIM Bangalore create a niche for itself. And yeah, that's largely how I would say it has maintained or probably even enhanced the reputation it has. Yes, very nice. Participants, sir is still open for any queries and doubts from your this sides. Otherwise, the session is likely to be closed. Sir, you wait for another couple of minutes, because Shankar Institute of Technology, they want to honor you by way of memento and certificate. Sure, I'm online. Yeah. Okay. Oh, yes. Because these days, particularly in the developing countries, the research is given more weightage in all academic institutes. And the academic institutes which stands better on the research part, they stand better in overall the growth. Agreed, sir. Yeah, definitely. Research focus is to be there. And to Yeah. all the participants, our instruction to all the participants, our next session will start at 11:30. We will have a break for about 25 minutes. And next session will be taken up by Mr. Rajendra Chaudhary. He is IS
Assistant Commissioner with the Ministry of Government of India, and he will speak on higher study opportunities for civil services. So be with us after about 25-30 minutes. अभी बोल रहा था मैं, अभी देख लेता हूँ. Sir, this as a is a token of remembrance from Shankar Institute of Technology, memento to you, so that we remember each other for the days to come. Thank you, sir. Much appreciated. Thank you. Thanks a lot. Yeah. This is a certificate of appreciation from Shankar Institute of Technology as a part of respect and honor to you. So thank you very much, sir. Thank you. We Thanks look a lot. forward. All the best, We everyone. look forward. Yeah. Yes, yes. Yeah. Thank you. Thank you. Thanks.
Good morning, Rajendra sir. Now you can check your slides. Namaskar. It is audible? Yes, sir, it's audible. Okay. Let's check for the video also. Clear? Yes, sir, it's clear. Okay. Thank you. Most प्रेजेंटर बना welcome, दिया sir. आपने मेरे को? Yes, sir. Can I share? Okay. Presentation visible? Yes, sir, visible. Okay. Thank you. Most welcome, sir. Sir, Mr. Rajat Chaudhary. Hello. Yes, sir. Hello. हाँ सर, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही sir. I'm not getting you. हेलो, वीडियो दिखाई दे रहा है? Sir, good morning. No, I'm Good not morning, sir. getting Good you, morning. sir. Not audible. One sec, sir. Hello. 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 सर आ रही है आपकी Good आवाज morning, क्लियर है sir. सर. Good morning, Some sir. problem with the voice. सर बाकी लोगों को आ रही है ऐसा बताया जा रहा है. एक बार आप देख लीजिए. Volume is very low, sir. Volume is very low. ओके, मैं इंक्रीज करता हूँ इसको. From my side is now volume is high, sir. Hello. It's audible, sir. Now clear. No, it's clear, sir. Clear. Hello. Okay. Sir. हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है. Sir. हाँ. हाँ. आवाज आ रही है, sir. Yes, good morning to you. Because we will start this session at 11:30 sharp.
So, Sure. so my suggestion is, in the meantime, you can adjust your system and everything. Yeah, I'm ready for that. Yes. Okay, sir. Thank you.
सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी सर, अब आ रही है क्लियर। 5 minutes to go. Before you take the session, I will give a brief of your profile to the participant. Sure. Hello. Sure. Yeah. Yes. Okay. Yes, all participants. Welcome you back for the second session of the day. Now, in this sessions, we have Mr. Rajendra Chaudhary. He is IAS and currently working as Assistant Commissioner in the Ministry of Finance, Government of India. Sir did his graduation. Sir did his graduation from IIT Kharagpur in agriculture engineering. In between lot of noise. Working in please participant keep your voice on mute basis, on the mute. Some disturbance, background disturbance is coming. So, sir did his graduation from IIT Kharagpur in agriculture and food engineering in Chennai. He completed his post-graduation in literature, language with all India. During graduation, sir represented India as a cultural ambassador to Japan in Japanese government program named Japan East Asia Network of Exchange of Students and Youth. Sir has professional as well as personal capacity. He is very much enthusiastic in guiding students and making efficient education system in India. Sir, before moving to Indian services, he worked in GG Dandekar Rice Mill Manufacturing Firm, Akash Educational Private Limited, and Chennai Customs. Over to you, sir. You can start taking the sessions. The topic of sir today's deliberation is higher opportunity through civil services. Sir, duration of this session is 60 minutes. Before end of the sessions, before 5-10 minutes before end of the session, you can take queries, question answer sessions, or if you feel comfortable, you can take queries participating in your sessions. Welcome you, sir, again, and good morning. Over to you, sir. Thank you very much, Dr. Atiji, for your kind words and brief introduction. Yes. Before commencing Yes, the welcome. session, I would like to thank you very much for Rajasthan Technical University and the Sankara Institute of Technology for giving me an opportunity to interact with young minds. I also take this opportunity to thank Professor R. A. Gupta ji, Vice Chancellor RTU, and Dr. S. K. Chaudhary ji, Chairman SIT, for conducting a workshop on a very crucial topic such as higher education. And special thanks to Professor Surendra Godara ji and Sri Sikandar Khan ji for coordinating the events. Very good morning to all of you. Today's topic is higher education opportunities through civil services. Throughout the week, you have learned many career opportunities in higher education in different fields.
namely MTech, MBA, and other areas of interest in social service, sociology, or literature or anything. My topic is through civil services. So friends, don't make it as a monologue only. We try to make it as a dialogue. So through chats, or if you have any question, you can ask in between also. Wherever you feel comfortable, you can stop me. I try to finish my lecture in 40 minutes, and after that we'll take a question answer. So shall we start? Okay. Yes, start. Sure, sure. Thank you, We sir. are in time. Yeah. हाँ, हमारे पास में जो टॉपिक है उसमें दो वर्ड हैं. वन इज हायर स्टडी एंड सेकंड इज सिविल सर्विसेज. मोस्टली ये वाला टॉपिक सिविल सर्विसेज में एंट्री के बाद लिया जाता है, क्योंकि एक बार सर्विस में एंट्री हो जाती है उसके बाद आपको देखना होता है कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज आपको हायर स्टडीज में है. लेकिन आप सब लोग अभी कॉलेज में हैं और कुछ फर्स्ट ईयर्स में होंगे, कुछ फोर्थ ईयर में होंगे. आप सिविल सर्विसेज को एज ए करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो तैयारी करने से पहले आप कौन सी सर्विस में लैंड करोगे ये आपको पता नहीं है. तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि भारत में जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उसके जरिए कौन कौन सी सर्विस है, उनके जरिए आपको हायर स्टडीज कहाँ कहाँ मिल सकती है, वो वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. तो आज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस okay. The objective session, I have divided this session in three parts. In first part, we will discuss the various civil services in the country, their brief introduction, and higher studies opportunity in those services. In second part, मेरे इस सेशन के बाद में आपका सफीन सर के साथ में भी एक सेशन है, उसमें वो डिटेल में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को किस तरीके से क्रैक करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और उसमें ये कोशिश होगी कि आप अपने कॉलेज टाइम में किस तरीके से सिविल सर्विसेज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो, तो उस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे. और लास्ट वाला पार्ट रहेगा, इट इज़ अ लर्निंग सेशन फॉर यू एज वेल एज मी. तो आपके क्वेश्चन आंसर से मैं इनरिच होऊंगा और मेरे सेशन से आपको करने की कोशिश करूंगा. सो इन थर्ड पार्ट विल टेक द फाइनल क्वेश्चन आंसर एंड फाइनल टेक अवे फ्रॉम मी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन. The first question is why civil services? So anybody can answer in chat also or in audio कि civil services क्यों join करनी चाहिए? I'm giving you 1 minute time. I'm taking chats also. So if you want to write in that, you can write. Why civil services? Why should we join civil services? No response? Okay, fine. Start. Yes, So बहुत participants, obvious I सा think reason they है. can put some questions. सैटरडे सेशन करने It अपने gives a wider challenges हैं, opportunity to serve especially the for people. no problem, it happens. ओके, तो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के मेजर रीजंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट किए हैं. तो फर्स्ट इज लेजिटिमेट पावर एंड अथॉरिटी टू मेक पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी. अगर हम देखें कि भारत में शायद ही कोई ऐसा करियर ऑप्शन होगा जहाँ पे आपको 21-22 साल की एज में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इतनी पावर मिलती है कि आप सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हो. जहाँ पे जैसे कई कई लोग होते हैं जो 24-25 साल की उम्र में एक डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन आपको पता है 30 लाख 40 लाख तक का पॉपुलेशन होता है. तो इतने सारे लोगों को मैनेज करने की अथॉरिटी आपको सिविल सर्विसेज के जरिए मिलती है. और शायद यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो जॉब सेटिस्फेक्शन एक किसी भी जॉब में रहता है वही सर्विस में होता है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी लार्ज होता है. थर्ड थिंग इज जॉब सिक्योरिटी. कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में एंट्री जितना मुश्किल है, एग्जिट उससे ज़्यादा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करता है. अगर आप सही है तो आपको हटाना इट्स नियरली इम्पॉसिबल.
क्योंकि आपको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं और आपका रिमूव भी प्रेसिडेंट से होना चाहिए। तो विदाउट ए सॉलिड ग्राउंड आपको हटाना इट्स वेरी टफ जॉब। रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, इट इज ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग, एवरीबडी नोज। ग्रेट एंड वाइडेस्ट नेटवर्क, यहाँ पे आप अभी थोड़े दिनों पहले हमारी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर के साथ में मीटिंग थी, तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ सिविल सर्विसेज के जरिए मिलती है। कुछ दिनों बाद में हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर के साथ में मीटिंग होती, तो अगर हमारे पास में कोई भी आइडिया है, मोस्टली हर व्यक्ति के पास में किसी न किसी प्रकार का आइडिया होता है जो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए वो जरूरी समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि वो अपने आइडिया को कहाँ पे रखें। बहुत सारे सोशल मीडिया और लोगों के अपने ट्विटर हैंडल्स होते हैं, वहां पे वो रख देते हैं, लेकिन उसको पढ़े जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप अपने लेटर हेड से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेजते हैं, तो बहुत हाई चांस है कि आपका लेटर एक बार कंसिडरेशन में होगा। वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंडिंग ऑन दैट वैल्यू ऑफ दैट आइडिया, बट कंसिडरेशन जरूर होगा, और ये अपॉर्चुनिटी आपको सिविल सर्विसेज देती है। लगभग और इंडिया में ऐसा कोई भी एरिया नहीं है, कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे आपका किसी न किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं होगा। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, मोस्टली आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन नहीं करेंगे और वो प्राइवेट सेक्टर में ही काम करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में वो किसी न किसी हायर पोजीशन में पहुंचेंगे, आप गवर्नमेंट सेक्टर में रह के हायर पोजीशन में पहुंचोगे, और दोनों का एक बेटर कोलेबोरेशन हो सकता है और बेटर कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है लेकिन ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन आपके इस कोऑर्डिनेशन से, इस नेटवर्किंग से आप प्राइवेट और गवर्नमेंट की बेस्ट चीज़ों को एक साथ लेके सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस ऑफ द जॉब्स, आपने देखा है कि पुलिस सर्विसेज में जो लोग होते हैं उनको कितने सारे इवेंट्स मैनेज करने होते हैं, नक्सल ऑपरेशंस में जाना होता है, टेररिज्म को हैंडल करना होता है। तो ये चैलेंजेस ये जॉब प्रोवाइड करता है आपको। और बाकी सारे जितने भी है, जैसे अभी आपने देखा कि पूरा जीडीपी है वो डाउन चला गया था, तो जो भी रेवेन्यू सर्विसेज है, एक्सपेंडिचर सर्विसेज है, उनका सबसे बड़ा जो टास्क था कि मतलब कैसे हम वापस इकोनॉमी को पटरी पे लेके आए। तो ये सारी पॉलिसीज बनाना, बड़े डिसीजन लेना, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिसीज करना, ये सब सिविल सर्विसेज के अंदर आता है। एंड थर्ड इज अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, क्योंकि आप 30-35 साल तक सिविल सर्विसेज में भारत सरकार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। और उस एक्सपीरियंस को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, उसको भुनाना चाहेगा। जैसे आप देखो कि अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल जी, वो पहले पुलिस सर्विसेज में थे, उन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अपने एनजीओ के जरिए भी काम किया, और अभी वर्तमान में भारत सरकार के लिए वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसलिए सिविल सर्विस एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, और उसको लेने के लिए कई कई लोगों को 5-5, 6-6 साल का टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, एनर्जी लगती है, बट इट इज़ ए वर्थ, देयर इज़ ए प्राइस टू बी पेड फॉर गेटिंग ए गुड थिंग। लेकिन मैं अपने कॉलेज टाइम में भी इस डिस्कशन में शामिल हुआ था कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग थे जिनका ये मानना था कि नहीं, सिविल सर्विसेज से भी बेटर करियर ऑप्शंस कई सारे हैं, तो उनके अपने रीजन से, इसीलिए मैंने इस पॉजिटिव के साथ साथ में कुछ चैलेंजेस भी सिविल सर्विसेज के साथ में यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। अगेन क्वेश्चंस, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू आंसर, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाई वी शुड नॉट come in the civil services, or many people think that this is not a better career options, we have other career options. So I'm again giving you 30 seconds if you want to answer why people are not coming to civil services. You can write in the chat also. Okay, no problem. So challenges, it is considered as one of the toughest examination. अगर 1000 लोग एग्जाम देते हैं तो 5 लोग हार्डली इस एग्जाम को पास करते हैं, तो सक्सेस रेट बहुत कम होता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक जुआ है और हमको इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपने यूथ एज के 5-6 साल इसके अंदर चले जाते हैं। बट अगेन, आपको कोई बड़ी चीज़ अचीव करनी है तो टाइम तो लगता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। कॉलेज में जनरली कहा जाता है कि एग्जैक्टली संदीप आंसर्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वेरी गुड। तो सिंपल सा रीज़न बोलते हैं कि यार हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे ऊपर एक बॉस आके बैठ जाता है जो अनपढ़ है, उसको समझ नहीं है, उसको सिर्फ अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट फुलफिल करना होता है। वो फ़ोन करते रहते हैं, धमकाते भी हैं, अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे तो आपके ट्रांसफ़र भी करवा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट यही नेचर ऑफ जॉब है, आपको करना होता है। ये बैलेंस कैसे सिखाता है, ट्रेनिंग के अंदर आपको इसकी पूरी
बताया जाता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल बॉस को हैंडल करना होता है, सबऑर्डिनेट को हैंडल करना होता है, ये सब चीजें सिखाई जाती है, बट अगेन इट्स ए चैलेंज। थर्ड, पब्लिक स्क्रूटनी। आज से 20 साल पहले ना सोशल मीडिया था, ना मीडिया इतना एक्टिव था, ना आरटीआई था, ना सीसीटीवी कैमरास था, तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज और ये चीजें नहीं थी, इसलिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता था सिविल सर्विस। लेकिन आज ये सारी चीजें हैं, अब कोई भी एक्शन लेते हो, आपने फाइल में क्या नोटिंग की है उसको भी आरटीआई के जरिए निकलवाया जा सकता है, और डिसीजन लेने से पहले वो डिसीजन पब्लिक स्क्रूटनी में आ जाता है, और उससे चैलेंजेस काफी सारे बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, सैलरी इज नॉट कंपेयर टू प्राइवेट। गवर्नमेंट में ऐसा कहा जाता है कि ग्रुप डी की जो सर्विस होती है उसके अंदर सैलरी गवर्नमेंट में ज्यादा है प्राइवेट से, लेकिन ग्रुप ए की सर्विस है वो कम है, लेकिन ये अपना अपना परसेप्शन है। 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन से काफी हद तक सैलरीज बढ़ी है, और आज अभी रेस्पेक्टेबल सैलरीज है, बट अगेन इट्स नॉट कंपेरेबल टू प्राइवेट। जो प्राइवेट कंपनीज के सीईओज को या और बाकी हायर पोस्ट को मिलता है उतना नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट इज ट्राइंग। सिंगापुर मॉडल आपको पता होगा, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट दैट, तो वो उनके पाइपलाइन में है और ये बढ़ भी सकती है। Fourth is lateral entry. I will discuss in detail because our topic is related to lateral entry in the next slide. और लेटरल एंट्री का मैं ब्रीफ यहाँ पे थोड़ा सा दे देता हूँ कि लेटरल एंट्री होती क्या है। कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आप अपने किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, अर्बन डेवलपमेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो सकता है। तो अगर आप वहाँ पे अच्छा कर रहे हो तो सरकार को पॉलिसी फॉर्मेशन में आप मदद कर सकते हो। तो सरकार आपको शॉर्ट टर्म के लिए 3 years अप टू एक्सटेम्बल टू 5 years, वो आपको जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे, जो नॉर्मल सिविल सर्विसेज से 20 years की सर्विस पे आती है, और कुछ डायरेक्टर पोस्ट पे जो मोस्टली 9-10 years पे आती है, उस पे आपको डायरेक्टली अपॉइंट करती है और आपको अपना काम करने का फ्रीडम देती है। तो कई सारे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम अपने फील्ड में चले जाते हैं, वहाँ पे हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो बाद में भी हम भारत सरकार के लिए और नेशनल बिल्डिंग के अंदर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू लेटरल एंट्री। तो वो इस स्टेज पे सिविल सर्विस एग्जाम को नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 4-5 साल है वो हम अपना एक्सपर्टाइज को करने में लगा देते हैं। डिस्टर्ब्ड वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत सारे लोग, अभी ये रिसेंटली चर्चा में आया क्योंकि कुछ सुसाइड हो गए, कुछ की फैमिली ब्रेक हो गई, मैरिज टूट गई, तो कई सारे लोगों ने बोला था कि क्या ये वर्क और लाइफ में बैलेंस बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। अगेन ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, क्योंकि वर्क प्रोफाइल सबका सेम सा होता है। बहुत सारे लोग इसी वर्क प्रोफाइल में बहुत अच्छा कर लेते हैं, वो एक अंदर से एनर्जी आती है, उसको करना होता है। कई बार वो लोगों में नहीं आती है, तो इसलिए उनको काम बोझ लगता है, और वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, नॉट नेसेसरली सिविल सर्वेंट, वो कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपको अपना काम में मजा नहीं आएगा तो फिर वो बर्डन लगने लगेगा और फिर आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं कि अब हम ये देखेंगे कि सिविल सर्विसेज कैसे कैसे अपॉइंट होती है। तो इन जनरल भारत में जितनी भी गवर्नमेंट के लिए जो काम करते हैं वो सारे सिविल सर्विसेज हैं, ग्रुप डी टू ग्रुप ए। लेकिन यहाँ पे मेरा मेजर जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के जरिए जो सिविल सर्विसेज के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं, स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, उन पे मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा। तो वेरियस ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, हमें 2 ऑप्शन हैं। एक हमने देखा कि यूपीएससी होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, और दूसरा लेटरल एंट्री जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके पैरेलली अगर हम चाहें सेंटर के, तो हम स्टेट में होता है, और स्टेट का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जैसे आपको पता है कि राजस्थान के अंदर आरएस का एग्जाम करने के लिए आरपीएससी अपॉइंट की होती है, और वो अपना रेगुलर इंटरवल पे एग्जाम्स लेते रहते हैं। अगेन 30 सेकेंड बॉल इन योर कोर्ट, कि आप कौन कौन से सर्विसेज के नाम जानते हैं जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होती है। 2 नाम मैं बता देता हूँ, आईएएस और आईपीएस। इसके अलावा अगर आप कुछ बता पाए तो इट वुड बी बेटर, इससे मुझे ये पता लगेगा कि आपका इस फील्ड में कितना है। दैट्स ग्रेट। प्रगति खंडेलवाल रोड आईएफएस एंड आईआरएस, दैट्स ग्रेट। और आईएफएस, यस सूर्या। और बाकी कोई भी सर्विस, राजस्थान के सर्विसेज के बारे में कुछ बताइए, आरएएस के अलावा, आरपीएस के अलावा कौन सी सर्विस होती है उसके कंपेरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके फाइन।
मेरे टॉप का जो मेजर इश्यू है वह यही है कि सिविल सर्विसेज को मोस्टली आईएएस और आईपीएस ही मान लिया जाता है, जबकि और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं और यूपीएससी के जरिए करीब 24 सर्विसेज का सिलेक्शंस होता है और बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम का तैयारी आईएएस आईपीएस मान के करते हैं और आईएफएस फॉरेन सर्विस का मान के करते हैं, लेकिन बाद में वो किसी दूसरे सर्विस में भी उनको रहती है और वहां पे भी उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये जो 24 सर्विस है इनको अगर हम दो, हाँ, डिफेंस अपॉर्चुनिटीज, या दैट्स ग्रेट, डिफेंस के अंदर 2-3 सर्विसेज है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट्स ग्रेट। ये 24 सर्विस है, इनको अगर हमें दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटना है तो वो हम कर सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विस होती है और एक सेंट्रल सेक्टर सर्विसेज होती है। तो अभी वर्तमान में कोई मुझे बताएगा कि कितने ऑल इंडिया सर्विसेज हैं भारत में? हाउ मेनी ऑल इंडिया सर्विसेज आर देयर करंटली? ओके, 3 सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS. One is IFS is Indian Foreign Service and one is IFOS Indian Forest Service. So the basic difference between the All India Service and Central Civil Service is that recruitment of the both the services through the centers. And UPSC ही recruit करती है दोनों के लिए, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और इनका अपना कैडर सिस्टम होता है, डिफरेंट स्टेट में या ग्रुप ऑफ स्टेट्स का एक कैडर होता है, उस कैडर के अंदर ये ऑल इंडिया सर्विस के काम करते हैं। अगर रिमूवल करना है तो आपको अगेन यूपीएससी की जरूरत पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत होगी, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए और टेम्परेरी सस्पेंड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होता है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो होती है उनका रिक्रूटमेंट भी सेंटर करता है, ट्रेनिंग भी सेंटर करवाता है और वो काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, यहाँ पे मैं सारी सर्विसेज की लिस्ट दे रहा हूँ, आगे हम इन सारे सर्विसेज का वापस डिस्कशन करेंगे ब्रॉड कैटेगरीज में और कंटेक्स्ट देखेंगे किस तरीके से सिविल सर्विसेज के अंदर हायर एजुकेशन के लिए उनके जरिए हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये सारे सर्विसेज है, 24 सर्विसेज मैंने लिस्ट डाउन कर दी है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ देखेंगे। अब एक पार्ट हो गया हमारा सिविल सर्विसेज। नाउ जो हमारा टॉपिक था हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज थ्रू सिविल सर्विसेज, तो अगेन इज बॉल इन योर कोर्ट, हायर एजुकेशन, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से आप हायर स्टडीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि हायर स्टडीज की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों चाहिए हमें हायर एजुकेशन? यस प्लीज। ओके, आई विल एक्सप्लेन। हाँ, अगर हमको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहना है तो हमें अपने स्किल्स को हमेशा एक्सेल करते रहना पड़ेगा, just to have more knowledge and expertise in that field as the service. That's great. That's a very nice answer by प्रगति। क्योंकि लाइफ बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, मोस्टली आप में से जितने भी अटेंडीज हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, वो आफ्टर 2000 बोर्न होंगे, तो मिलेनियम जनरेशन है, तो आपने जितने चेंजेस देखे हैं शायद पिछली जनरेशन ने नहीं देखे होंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जितने चेंजेस पिछले 5 साल में हुए हैं, हो सकता है उतने चेंजेस पिछले 50 साल में ना हुए हो, और जितने पिछले 50 साल में हुए हैं उतने हो सकता है पिछले 500 सालों में नहीं हुए हो, और जितने 500 सालों में चेंजेस नहीं हो सकता है कि 50,000 सालों में भी नहीं हो। तो चेंज, लाइफ बहुत तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजीज इतनी तेजी से आ रही है, तो अगर हम उसको नहीं सीखेंगे, अगर हम अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम लेफ्ट आउट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, जो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर में कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन यंग जनरेशन कंप्यूटर में कंफर्टेबल थी और उन्होंने बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज कंप्यूटर के अंदर जनरेट की और अभी भी चीजें हो रही है। यही सेम चीज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और उन चीजों के लिए आती है, तो हमें अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहना चाहिए। डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, लेटरल एंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पेशलाइज्ड और जर्नलिस्ट, ये एक डिबेट हमेशा कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। तो इसको करने के लिए, क्योंकि आज एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता है, और अभी तक ये माना जाता था कि जो सिविल सर्विसेज है वो जर्नलिस्ट होते हैं, यानी कि वो कोई सा भी काम कर लेते हैं अगर उनको दे दिया जाए,
लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एक चीज है, लेकिन पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होता है। आपको उसके ऊपर जितने भी रिसर्च पेपर आ रहे हैं, जो भी नई स्टडीज हो रही है, उनकी स्टडीज होनी चाहिए। इसीलिए अब भारत सरकार की भी ये कोशिश है कि शुरुआत में भले ही वो जर्नलिस्ट रहे, लेकिन एक टाइम के बाद में उनको स्पेशलिस्ट बनाया जाए। इसीलिए उन्होंने करियर इवोल्यूशन के एक प्रोग्राम शुरू किया है, जो पहले भी था लेकिन उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया उन्होंने, कि एवरी 4 ईयर, 9 ईयर, 14 ईयर, 20 ईयर्स एंड 25 ईयर्स ऑफ द सर्विस ऑफ एनी सिविल सर्वेंट, वो इवेल्युएट करते हैं कि इस ऑफिसर को हमें किस फील्ड में भेजना है। तो मोस्टली 4 ईयर उनका 2 साल का प्रोबेशन होता है, तो वो ऐसे निकल जाता है और उनको एक पोस्टिंग मिल जाती है। तो अगले 5 साल में देखा जाता है कि उन्होंने किस फील्ड में कितना अच्छा काम किया है। और 9 ईयर के बाद में पहला इवेल्युएशन होता है, और उसके बाद में उनको डायरेक्टर्स की पोस्ट मिलती है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर एजुकेशन डायरेक्टर होते हैं, टूरिज्म डायरेक्टर होते हैं, वो मोस्टली जो यंग सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ताकि ये देखने के लिए कि वो उस फील्ड में किस तरीके से अच्छा काम करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिव्यू होता है वो 14 ईयर्स ऑफ सर्विस होता है, और उसमें यह देखा जाता है कि अगर उस पर्टिकुलर ऑफिसर को किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो फिर यहाँ से उनको हायर स्टडीज के लिए भी भेजा जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है कि आप इस फील्ड में हायर स्टडीज करके आइए। तो वो 2-3 साल वहां पे हायर स्टडीज करते हैं, फिर उस फील्ड में काम करते हैं। और 20 ईयर्स, दिस इज ए लैंडमार्क ईयर ऑफ एनी सिविल सर्वेंट। यहाँ से वो ज्वाइंट सेक्रेटरी वाली पोस्ट होती है। अगर आप इस साल तक सिविल सर्विस में रहते हुए किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं होते हैं, तो फिर आपको नॉर्मल काम दिए जाते हैं, एक्सपर्टाइज काम नहीं दिया जाता है। और यहीं पे जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट शुरू होती है और यहीं पे लेटरल एंट्री आती है। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स होते हैं वो मोस्टली इसी पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। तो उस प्राइवेट सेक्टर के कंपेटिटिव अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए हायर स्टडीज की जरूरत पड़ती है। एंड 25 ईयर्स इज एडिशनल सेक्रेटरी एंड आफ्टर दैट इज ए सेक्रेटरी। तो नाउ सिविल सर्विस में रहते रहते कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जहां पे हायर स्टडीज अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज को मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। all are popular universities from India as well as abroad. तो स्टैनफोर्ड, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, यूसीबी, आईएम्स। अभी थोड़ी देर पहले आप मिस्टर संदीप जोशी को सुन रहे थे, तो उन्होंने भी बताया था कि आईएम बैंगलोर है, वो काफी सारे कोर्सेज है वो सिविल सर्विसेज के लिए करवाते हैं। और ऐसे भी और भी बहुत सारे आईएम्स हैं जो डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, उनमें से 2-3 का मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी। और आईएएस जो लोग ज्वाइन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के बाद में 2 साल कंप्लीट, जब उनका प्रोबेशन कंप्लीट होता है, तो उनको जेएनयू से डिग्री मिल जाता है एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विदाउट गिविंग अ रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन। जो उनका डिग्री है, जो उनका ट्रेनिंग है, उसी के बेसिस पे जेएनयू से उनको पीजी का डिग्री मिल जाता है एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी अकाउंट सर्विस में और फिनांस सर्विसेज में लोग होते हैं, वो लंदन बिजनेस स्कूल से अपना मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, मतलब ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं। हार्वर्ड इज अ वेरी मच पॉपुलर, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं वो हार्वर्ड से एमबीए करने के लिए जाते हैं। एमबीए इन पब्लिक मैनेजमेंट होता है, एमबीए इन पब्लिक पॉलिसी होता है, विच इज वेरी मच पॉपुलर कोर्सेज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी है जो हैदराबाद में स्थापित है, और हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी भी है। तो वहां पे 2 साल की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ उनका कोलैबोरेशन है, और वो इनको एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए इन पुलिस मैनेजमेंट और पीएचडी के कोर्सेज ऑफर करती है, जो मोस्टली ऑफिसर्स उसको यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि आगे अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे डायरेक्टरशिप के लिए या फिर जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, तो आपका प्रोफाइल काफी मैटर करता है, और उसमें ये सारे कोर्सेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। येल यूनिवर्सिटी है, आईएम कैलकाटा है, इग्नू, ये सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है, आपको एग्जाम देने का पूरा फ्रीडम होता है, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, 6 महीने के कोर्सेज भी हैं, 1 साल के कोर्सेज भी हैं, 2 साल के कोर्सेज भी हैं, पीएचडी भी है। तो मोस्टली लोग इग्नू को करते हैं और कंटिन्यूअसली चलता रहता है उनका, कि मतलब हर 6 महीने में 1 साल में वो कोई ना कोई कोर्स और डिप्लोमा लेते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको। ठीक है, आईएम अहमदाबाद है, आईएम बैंगलोर आपका सुना ही था। एमआईटी से बहुत सारे जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स, उसमें काफी सारे कोर्सेज और डिप्लोमा करने के लिए ऑफिसर्स जाते हैं। एंड दिस इज नालसर यूनिवर्सिटी अगेन इन हैदराबाद। और ये जिस प्रकार उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन है, वैसे रिसेंटली इन्होंने कोलैबोरेशन किया, और ये पीएचडी और डिफरेंट कोर्सेज हैं वो पुलिस ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली लॉ यूनिवर्सिटीज है, तो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज थे वो मोस्टली ये लोग करते हैं। जो हमने 24 सर्विसेज देखी थी, उनको पहले हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा था, ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल से सिविल सर्विसेज। उसको अगर हम वर्क प्रोफाइल के हिसाब से देखें, तो फिर मैंने वापस से 4 कैटेगरीज में इनको बांटा है। तो देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज है।
तो सर्विस कैटेगरीज, वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज जिनका मेजर काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी फॉर्मेशन इनका मेनली काम होता है. Other services are uniform services. Third is the account or finance services, and fourth is the ministry specific service. जैसे आपने इंडियन फॉरेन सर्विस का बताया तो दैट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. सो एक मिनिस्ट्री का उसके अंदर ज्यादा फोकस होता है. बाकी जो अकाउंट एंड फिनेंस होते हैं वो एक सेक्टर मिनिस्ट्री में रहते हैं लेकिन काम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए करते हैं. अब हम इंडिविजुअल सेक्शन को देखेंगे, ग्रुप को देखेंगे और उसमें कौन कौन से हायर अपॉर्चुनिटीज हैं और कौन कौन से एरियाज वो मेनली फोकस करते हैं उन पे हम फोकस करेंगे. अगेन क्वेश्चन बॉल इन योर कोर्ट. एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आएगी, बट आपने पहले बताया उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि आप बाकी सर्विसेज बता पाओगे, इसलिए मैं ही बता देता हूँ. वन सर्विस यू वेरी मच नो इज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS इज दैट. और इसी के साथ में 2-3 और सर्विस है जिनका काम भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के तौर पे ही होता है लेकिन वो मोस्टली ज्यादा लोगों को पता नहीं है. तो ये 3 सर्विस और हैं, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज जिसको दानिश बोला जाता है, और पुडुचेरी सिविल सर्विसेज. ये दोनों ग्रुप बी सर्विस हैं. जैसे राजस्थान में आपने देखा कि RS जो होते हैं वो SDM पोस्ट होती है. तो अगर आपको दिल्ली अंडमान निकोबार में SDM बनना है तो आपको इसी एग्जाम के सिविल सर्विस एग्जाम के जरिए दानिश सर्विस को लेना होगा, जो हालांकि ग्रुप बी सर्विस है लेकिन उसका पूरा सिलेक्शन जो है वो इसी प्रक्रिया से होता है. तो और 15 से 20 साल डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज एंड अपॉर्चुनिटीज इनका IAS के अंदर प्रमोट हो जाते हैं. सेम चीज है, दूसरा यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, उसके अंदर भी जो सिविल सर्विस है उसका सिलेक्शन भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जरिए ही होता है. और एक सर्विस है जो शायद आप लोगों में से कई लोगों ने पहली बार सुनी होगी, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस. तो भारत में डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंटोनमेंट्स होते हैं, छावनीज होती है. उन छावनीज का जो कंट्रोल करते हैं उसका जो कलेक्टर होता है वो होता है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस का ऑफिसर. तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑफिशियल नेम जो होता है उनके पोस्ट का वो होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट कंटोनमेंट. तो ये इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस से आते हैं. तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये लोग कौन कौन से एरियाज के अंदर हाई स्टडीज करना चाहेंगे क्योंकि इनके काम किस तरीके से है. तो अगेन इफ यू एनीबडी वांट टू आंसर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कौन से फील्ड के अंदर ये लोग मोस्टली अपना इंफॉर्मेशंस नॉलेज इकट्ठा करते हैं. तो बहुत पॉपुलर से एरिया है और IAS के बारे में सब लोग ये जानते हैं कि कलेक्टर के तौर पे ही उनकी ज़्यादा विजिबिलिटी होती है. तो शुरुआत भी वहीं से करते हैं. तो जब एक ऑफिसर IAS ऑफिसर कलेक्टर रहता है उस वक्त वो मोर देन 20 डिपार्टमेंट्स हेड करता है. और अगर आप किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हो या उसकी मीटिंग्स ले रहे हो, उसमें इनपुट्स ले रहे हो, दे रहे हो, तो आपको उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. नहीं तो आपको कोई भी गोली देके चला जाएगा कि नहीं सर ऐसा होता है. अगर आपको पूरी समझ नहीं होगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है. तो उस पूरे पब्लिक मैनेजमेंट करने के लिए आपको सारे डिपार्टमेंट्स का अच्छा खासा एरियाज नॉलेज होना चाहिए. तो मेजर फोकस एरिया, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट ये, लेकिन मैंने पॉपुलर जो एरियाज है उन्हीं को यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि ये ऐसे एरियाज है जो किसी स्टेट तक या फिर किसी कंट्री तक स्पेसिफिक नहीं है या वहीं तक लिमिटेड नहीं है. पूरे अगर वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है. तो अगर आपको उस फील्ड में मास्टर होना है तो आपको एक लेवल का एक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है. संदीप किस टाइप का डिजिटाइजेशन? ओके नाइस संदीप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी फॉर्मेशन, डिजिटाइजेशन, दैट्स ग्रेट. डिजिटल इंडिया को मैक्सिमम जो लोग रन कर रहे हैं मोस्ट आर सिविल सर्वेंट्स. तो ये स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जिनके अंदर मोस्टली जो IAS ऑफिसर्स होते हैं वो अपना हायर एजुकेशन करते हैं. क्योंकि अभी आपने देखा कि कोविड के टाइम पे हेल्थ का इशू था, डेली होम मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस आ रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन आ रही है, WHO के साथ में कोऑर्डिनेशन करना है. एक ऐसी प्रॉब्लम जो आज तक किसी ने नहीं देखी है, तो आप उसको तभी हैंडल कर सकते हो जब आपको उस पूरे सब्जेक्ट पे आपकी एक बहुत अच्छी पकड़ होगी. तो कई सारे ऐसे जैसे माइग्रेशन के प्रॉब्लम्स को ढंग से हैंडल नहीं कर पाया क्योंकि माइग्रेशन का डेटा नहीं था, माइग्रेशन पे किसी का एक्सपर्टाइज नहीं था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई. तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, नई प्रॉब्लम्स आती है, पुरानी प्रॉब्लम्स आती है, उनको हैंडल करने के लिए हायर स्टडी करनी पड़ती है. पब्लिक पॉलिसी को मैंने रेड कलर में लिखा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा किए जाने वाला कोर्स है. मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, MPP बोलते हैं. और पॉलिसी फॉर्मेशन, क्योंकि आप हेल्थ के लिए बनाओ, चाहे एजुकेशन के लिए बनाओ, चाहे अर्बन डेवलपमेंट के लिए बनाओ, पॉलिसी फॉर्मेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है कि
उसका सक्सेस रेट हाई कैसे किया जा सकता है, लोगों का फीडबैक। जैसे मेरे लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपका पार्टिसिपेशन मैं कैसे बढ़ाऊं। तो सेम चीज ये होता है कि अगर हम कोई भी पॉलिसी लेके आए तो वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी जब तक वो उसके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जनता के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जैसे बहुत सारे पॉलिसीज आई है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन क्यों इतना सक्सेसफुल हो पाया? क्योंकि इसने लोगों के साथ में रेजोनेट किया, एक मूवमेंट बना दिया। तो दैट इज द सक्सेस ऑफ द पॉलिसी। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजों को करने के लिए वो मास्टर इन पब्लिक पॉलिसीज करते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे वो लोग अपना कोर्सेज करते हैं, एमबीए करते हैं। जैसे हार्वर्ड से बहुत सारे लोग जो आईएएस हैं वो एमबीए करते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होता है, सर्टिफिकेट, जैसे मैंने इग्नू का बताया, आईएम से बताया, वो कई सारे कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पे करते हैं। यहाँ मैं आप कुछ एग्जांपल्स आपको बताना चाहूंगा, कुछ सेलिब्रेटेड सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने क्या क्या कोर्सेज किए हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जूम करना मुश्किल होगा और ये आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा। तो यहाँ आप देखोगे कि ये आईएएस ऑफिसर है राजू नारायण स्वामी, केरला कैडर के 1991 बैच के हैं। तो जब इन्होंने सर्विस ज्वाइन किया था तब ये कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर थे, आईआईटी मद्रास से उन्होंने किया था। और ये भी हम मान लेते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट हमें ईयर नहीं पता है, तो ये भी मान लेते हैं कि इन्होंने एमबीए भी शायद सर्विस में आने से पहले कर लिया था। तो यानी कि 2 सर्विस जो है इन्होंने यहाँ 2 कोर्स है वो इन्होंने सर्विस में आने से पहले कर लिया था। लेकिन उसके बाद में जितने भी कोर्सेज है वो इन्होंने सर्विस में रहते रहते किया है। पीजी किया है इन्होंने इग्नू से, फिर इन्होंने पीएचडी किया है अमृता विश्व विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। आप देखिए कि किस तरीके से डाइवर्सिटी बढ़ रही है। ग्रेजुएट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, ही डिड एमबीए एंड आफ्टर दैट ही इज मूविंग टू इकोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर वो अपना पीएचडी कर रहे हैं। उसके बाद में अर्बन डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली से इन्होंने किया। तो हो सकता है कि इस वक्त इनका पोस्टिंग दिल्ली में रहा होगा। तो दिल्ली में कई सारे इवनिंग क्लासेस होती है और अब तो ऑनलाइन क्लासेस आ गई है, तो बहुत सारे लोग अपने घर से भी बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स किया, फिर उन्होंने सर्टिफिकेट लिया लॉ एंड गवर्नेंस के अंदर, अगेन उन्होंने डिप्लोमा लिया, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। आप में से बहुत सारे लोग हैं रिसर्च में इंटरेस्टेड होंगे, वो पेटेंट करते हैं, कॉपीराइट होता है, जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ होता है, तो इसके अंदर इन्होंने मास्टर्स किया। अगेन एनवायरमेंटल लॉ के अंदर उन्होंने पीजी किया, फिर टूरिज्म के अंदर इन्होंने एक डिप्लोमा लिया। तो अगेन वही है कि आप जब काम करने जा रहे हो, उनको अगर नेक्स्ट पोस्टिंग मिलने वाली है टूरिज्म में, दे आर एक्सपेक्टिंग और दे आर इंटरेस्टेड, तो वो सेम को अपना चॉइस बताते हैं। उससे पहले उन्होंने टूरिज्म पे एक फुल फ्लेज कोर्स किया, तो उससे उनको पूरी डायमेंशन मिल गई, और अब अगर वो फील्ड में जाएंगे तो निश्चित रूप से उसके साथ वो जस्टिस कर पाएंगे। तो सर्विस में आने के बाद में उन्होंने कितने सारे कोर्सेज किए उसका एक झलक मैंने आपके सामने रखा। दूसरा इसी तरीके से सिमिलर देखते हैं कि ये था कोर्सेज के जरिए, और फिर कुछ है वो भारत सरकार भी आपको ट्रेनिंग करवाती है। जैसे ये अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं डॉक्टर ए बी पांडे, जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे हमारे। तो इन्होंने 2012 के अंदर 6th फेज ऑफ ट्रेनिंग किया था। फिर ये कुछ कोर्सेज हैं जो उन्होंने एनआईसी का कोर्स है, उन्होंने ये 1 वीक का, 2 वीक का, 3 वीक के इस टाइप के कोर्सेज हैं। अभी जैसे हमने आई एम बैंगलोर देखा था, वैसे आई एम इंदौर के इन्होंने लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया था। फिर मिड लेवल ट्रेनिंग होती है। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो इन ट्रेनिंग का हायर स्टडी का ये कि अपने स्किल्स को शार्पन करना। तो ये तरीके हमने देखा। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं पुलिस सर्विसेज के अंदर। तो पुलिस सर्विसेज के अंदर आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी सर्विस आती है। एक इंडियन पुलिस सर्विस आप जानते हैं, दूसरा आपको मैंने एक हिंट दिया था सिविल सर्विसेज के लिए दानिश का। तो क्या उसके बेसिस पे आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कोई सर्विस पुलिस में भी हो सकती है क्या? अगेन 30 सेकंड फॉर यू। Any other police service you know other than IPS or in Rajasthan RPS, Rajasthan Police Service? Any hint from Danis? CID. CID is a deputation post mostly. डायरेक्टली उसका एग्जाम शायद नहीं होता जहाँ तक मुझे पता है, और पुलिस सर्विस से या बाकी जो सेंट्रल सीआरपीएफ वगैरह होते हैं वहाँ से डेपुटेशंस पे बुला लिया जाता है उनको। बट यस, इट इज ए यूनिफॉर्म और पुलिस सर्विस जो काम वैसे ही करती है जैसा पुलिस करती है। ओके, दीज 3 आर द पुलिस सर्विसेज। इंडियन पुलिस सर्विस यू नो, और दानिप्स जैसे हमने देखा दिल्ली और अंडमान निकोबार के लिए सिविल सर्विसेज थी एसडीएम पोस्ट, वैसे डीवाईएसपी के लिए वो दानिप्स होता है, एंड सिमिलरली फॉर पुलिस सर्विस। अगेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्या एरियाज होंगे जिनके अंदर पुलिस सर्विसेज काम करती है?
इज वेरी पॉपुलर. लॉ एंड ऑर्डर, इवेंट एंड क्राउड मैनेजमेंट. अगर आपको कभी देखना हो, अगर मुंबई के अंदर आपने देखा होगा कि जब गणेश चतुर्थी होती है तो ऑलमोस्ट पूरे मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, और उस पूरे क्राउड को मैनेज करना. हैदराबाद में कई बार ऐसा होता है कि ताजिया और गणेश चतुर्थी ये दोनों एक ही दिन पड़ जाते हैं, और आप देख सकते हो कि कितना सेंसिटिव मुद्दा है. उस पूरे इवेंट को मैनेज करना इट्स रियली ए टैलेंटेड टास्क, क्योंकि इसे नॉर्मल व्यक्ति को करना इज रियली इम्पॉसिबल. आपको कैमरा से मॉनिटर करना है, आपको अपने लोग वहां पे छोड़ने हैं, वहां से इनपुट लेना है, दोनों फील्ड के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है, जनता के बीच में कोऑर्डिनेट करना है, हेल्पलाइन नंबर लगना है. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है, और उनको करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड स्टडी चाहिए होती है. आपको उस फील्ड में प्योरली ट्रेंड होना चाहिए, मास्टर होना पड़ेगा. रिसेंटली जो चीजें नहीं आ रही है, साइबर सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट थ्रेट. अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा कि चाइना की कुछ कंपनीज है, इन्होंने मुंबई के अंदर जो पावर था उसको शट डाउन कर दिया था. तो ये थ्रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल वारफेयर जो होता था आमने सामने लड़ाई वाले, ये चीजें अब खत्म हो रही है. साइबर सिक्योरिटी, एक कंप्यूटर एक छोटे से रूम में पता नहीं वर्ल्ड के किस कॉर्नर में बैठ के दूसरे कंट्री को परेशान कर देता था, दैट इज साइबर सिक्योरिटी चैलेंज. तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक्सपर्टाइज करते हैं, बाद में अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, तो इसके लिए जरूरी होता है. इंटरनेशनल क्राइम, बहुत सारे यहाँ पे आपने देखा होगा इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं जो देश छोड़ के चले जाते हैं, तो इंटरपोल से यूएनओ के साथ में पीस मिशन में जाना होता है, उसके अंदर उनको बहुत सारे कोर्सेज करने होते हैं. टेररिज्म, नक्सल मूवमेंट है, दोनों स्पेशलाइज मूवमेंट है. टेररिज्म के लिए बोलते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर हैं एंड आउटसाइड द स्टेट, जो स्टेट के नहीं है बाहर के लोग हैं, तो उनको टैकल करने का एक अलग तरीका होगा. नक्सल मूवमेंट में कहा जाता है कि वो भारत के ही लोग हैं लेकिन उनके कुछ राइट्स छीन लिए गए हैं जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनको टैकल करने का एक अलग तरीका हुआ है. यू कैनॉट हैंडल विद द सेम स्टिक, तो इसके लिए आपको एक्सपर्टाइज चाहिए होता है. तो अब आगे आपने ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने ये टर्म कोइन किया था स्मार्ट पुलिस. इफ एनीबडी वांट टू आंसर व्हाट इज द फुल फॉर्म और द मीनिंग ऑफ द स्मार्ट पुलिस, अगेन 30 सेकंड फॉर यू. What is the meaning of smart police? It is a full form of SMART. Anybody want an answer? You can guess also. There is no harm in making mistakes. Okay. So this is S for strict and sensitive, M for modern and mobile, alert and accountable, reliable and responsive, and techno-savvy and trend. So the last part is the techno-savvy and trend is completely fall in our topic, today's topic, higher studies opportunities through civil services. थर्ड सर्विस जो है जिसका कैटेगरी ऑफ सर्विस है अकाउंट एंड फिनेंस सर्विस. तो आप लोगों का कभी घर के अंदर ये, या फिर अभी आप पापा से अपना जेब खर्च लेते होंगे, तो उसका इनकम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. वैसे ही भारत सरकार के लिए भी होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, कौन से एरियाज में हमें खर्च करना चाहिए, फिर वो पैसा सही से खर्च हुआ है या नहीं हुआ है. तो वो सारे सर्विसेज का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आपके सामने. तो रेवेन्यू सर्विस है, तो अभी वर्तमान में 2 रेवेन्यू सर्विस है, और कुछ लोगों ने उसको ऑप्ट किया था. हाँ, प्रगति ने बताया भी था IRS है. तो 2 टाइप की IRS सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और इंडियन फॉर इनकम टैक्स एंड फॉर द कस्टम एंड GST. तो एक डायरेक्ट टैक्स के लिए है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए है. तो दोनों का काम होता है भारत सरकार के लिए मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना. सेकेंड कैटेगरी ऑफ सर्विस है कि उन्होंने पैसा जो भारत सरकार के लिए इकट्ठा किया है उस पैसे का खर्च कैसे किया जाए. तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रोफेसर्स अगर इस मीटिंग में हैं तो उनका सैलरी कट हुआ था ड्यूरिंग कोविड. तो वो एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ने किया था, क्योंकि उनको ये मैनेज करना है कि हमारे पास जितना पैसा है उसको किस तरीके से खर्च किया, क्योंकि हेल्थ के अंदर एक अननेसेसरी खर्च आ गया था हमारा जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो एक अनएक्सपेक्टेड था, तो उसको मैनेज करना होता है. तो 4 अकाउंट सर्विस है, उन 4 अकाउंट सर्विसेज के अंदर एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री के अंदर वो काम करती है. तो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस, रेलवे अकाउंट सर्विस, और ये सर्विस है IP टैप्स के नाम से अभी वर्तमान में चल रही है, लेकिन ये प्रपोजल है और इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है इसे, इंडियन कम्युनिकेशन एंड फिनेंस सर्विस. तो डिफेंस, रेलवे और पोस्टल एंड कम्युनिकेशन सर्विस, ये 3 डिपार्टमेंट स्पेसिफिक सर्विसेज है, और बाकी के अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं वो जो भी अकाउंट वाला पार्ट होता है वो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का आता है. और मैं इसी सिविल अकाउंट सर्विस का एक ऑफिसर हूँ, और इसीलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, जस्ट ऑन लाइटर नोट. एंड अब अगर आपका रेवेन्यू हो गया है और एक्सपेंडिचर हो गया है, उसके बाद में आपने जो काम किया है कि रेवेन्यू जितना होना चाहिए था, क्या आपने उतना रेवेन्यू कलेक्ट किया है,
और सिमिलरली एक्सपेंडिचर के जितना आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए था, क्या आपने उतना ही किया है या उससे ज़्यादा या उससे कम किया है, तो उसको करने के लिए एक ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आती है। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट है, वो CAG के अंदर आती है। CAG का नाम आपने सुना होगा। 2G स्पेक्ट्रम में, कॉल स्पेक्ट्रम में काफ़ी इन्होंने सुर्खियां बटोरी थी, और इनका जो काम है काफ़ी अच्छा काम है। और वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट ऑडिटर जनरल्स होते हैं उनके अंदर अपना इंडियन CAG का नाम काफ़ी हाई होता है। तो इनके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये हो सकता है कि आप लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाओ, क्योंकि ये सर्विस आपने बहुत ज़्यादा सुनी नहीं है, तो मैं ही बता देता हूँ इसको। तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, अगेन ये सारा पूरा टेक्निकल चीज़ें होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी कनेक्ट करना और स्पेशली वर्चुअल मोड में कनेक्ट करना इज रियली इम्पॉसिबल। तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है कि मैक्रो लेवल पे जितना भी फंड आ रहा है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मोस्टली अकाउंट सर्विसेज के द्वारा किया जाता है, और एक्सटर्नल ऑडिट CAG के जरिए जो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है। फंड मैनेजमेंट है, बहुत सारे लोग हैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड में रखते हैं, स्मॉल सेविंग में रखते हैं, जैसे आपने सुकन्या समृद्धि योजना से देखा होगा, और भी मतलब कई सारे पब्लिक अकाउंट्स होते हैं। तो उन सारे फंड को मैनेज करने के लिए ये सारे ऑफिसर्स अपना एक्सपर्टाइज करते हैं। कोर अकाउंटेंसी है कि जिसमें प्योरली मतलब जिसमें अकाउंटिंग होता है, तो CA वाला पार्ट हो गया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अकाउंट किस तरीके से मैनेज करें। तो ये कोर्सेज होते हैं, मास्टर एंड PhD एंड इवनिंग क्लासेज है, तो फाइनेंशियल ये मैनेजमेंट स्टडीज हैं जो DUA कॉलेज है वो एग्जीक्यूटिव MBA ऑफर करते हैं इवनिंग बैच के अंदर। यहाँ एक बार मैं फिर से आपको एक सेलिब्रेटेड ऑफिसर्स के बारे में हिंट देना चाहूंगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने कोर्सेज किए हैं। ये वर्तमान में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरीज हैं। TV सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो जब इन्होंने सर्विस ज्वाइन किया था तब ये BCom ऑनर्स थे कॉमर्स के अंदर, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड के आधार पे और आपका BCom का डिग्री के आधार पे आपको कोई भी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी नहीं बना सकता। लेकिन इनका इंटरेस्ट था कॉमर्स के अंदर, और उन्होंने अपने आप को इसी फील्ड के अंदर मास्टर्स करने के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज किए, और इसी से उनका CV रिज्यूमे है वो बहुत पावरफुल हो गया, और बहुत यंग एज के अंदर ये एक्सपेंडिचर सेक्रेटरीज बन गए। ये शायद इनका 3rd ईयर है, और पिछले साल हमको इनसे मिलने का मौका मिला था। एंड वेरी शार्प ऑफिसर, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये इश्यूज को समझ लेते हैं और अपने इनपुट्स देते हैं। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये फाइनेंस सेक्रेटरीज भी बने और कैबिनेट सेक्रेटरीज भी बने। तो इनके कोर्सेज देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इन्होंने CA किया, फिर कंपनी लॉ के अंदर इन्होंने CS किया, अकाउंटेंसी के अंदर इन्होंने लंदन से वापस CA किया, इंडिया में CA करने के बाद में फिर उन्होंने एक एडवांस कोर्स किया CA का, FCCA का। फिर एग्जीक्यूटिव में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जैसा मैंने आपको बताया पहले, वहां पे उन्होंने एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने कोर्सेज किया। फिर इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने PhD किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। तो ये हो सकता है कंटिन्यूअसली इनकी चलती रहेगी, सर्विस के दौरान अपने काम करते थे और सर्विस का भी था। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के लिए इन्होंने FCIS से लंदन से इन्होंने कोर्स किया। फिर फाइनेंस के अंदर इन्होंने CIM लंदन से इन्होंने कोर्स किया। तो इनकी जो CV है वो काफी पावरफुल CV बन जाती है, और वो आपका आगे जितने भी डेपुटेशन और कोर्सेज होते हैं उनके अंदर काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के एक ऑफिसर हैं, राजू सरन सर। ठीक है, इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर काम किया है। अभी ये वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, वहाँ पे जमैका में इन्होंने कुछ काम किया था। और उसके बाद में ये अभी वर्तमान में सारटेक जो एक स्कीम है IMF की, उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एडवाइजर हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये कोर्स करते हैं पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में। तो अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है तो न केवल आप भारत सरकार के लिए, बाकी इंटरनेशनल बॉडीज के लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उनके लिए भी आपको काम करने का अपॉर्चुनिटीज मिलता है। नेक्स्ट सर्विसेज हम देखते हैं, रेलवे और डिफेंस सर्विस के लिए। तो किसी ने मेंशन भी किया था डिफेंस अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यहाँ पे ये मोस्टली डिपार्टमेंट स्पेसिफिक सर्विसेज होगी, लेकिन ये दो सर्विसेज को मैंने अलग से रखा क्योंकि इनके सर्विसेज ज्यादा हैं। और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि रेलवे के जितनी भी सर्विसेज थे उनको मर्ज करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बना दिया है। तो सिविल सर्विसेज से उनको बाहर कर दिया और एक अलग एग्जाम होगा IRMS के नाम से। लेकिन इस साल तक वो सिविल सर्विस एग्जाम में ही है, लेकिन अगले साल से शायद ऐसा कहा जा रहा है कि अलग हो जाए। तो ये सर्विसेज हैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। इसको कहा जाता है कि ये रेलवे का कलेक्टर है। तो आपने देखा होगा पहले कि हमने देखा था छावनी का कलेक्टर देखा था जो IDES का था, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस का। वैसे रेलवे का जो कलेक्टर होता है उसको इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस का था, IRTS। फिर रेलवे पर्सनल सर्विस है, और ये एक यूनिफॉर्म सर्विस है कि आपको अगर पुलिस का यूनिफॉर्म इतना पसंद है और अगर आपको IPS नहीं मिलता है तो आप RPF सर्विस
को ऑप्ट कर सकते हो। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर। एक और सर्विस होती है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, उसको मैंने अकाउंट सर्विस के साथ मर्ज कर दिया था। ये 2 सर्विस है। अगेन डिफेंस अकाउंट को मैंने अकाउंट सर्विस के साथ मर्ज कर दिया था। और डिफेंस सर्विस में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और AFHQ होता है, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर। ये 2 सर्विसेज भी हैं जो इसके अंदर आती है। अदर डिपार्टमेंट की सर्विस है, ये 2 डिपार्टमेंट देखे, फिर और कुछ डिपार्टमेंट्स है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस होती है। अगेन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि एक एक डिपार्टमेंट का है और डिपार्टमेंट के नाम से वेरी मच क्लियर है कि उनका क्या काम होता है, तो वो उसी फील्ड में करते हैं। तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये होते हैं, उन सब की जो स्पीच लिखने वाला काम होगा और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल करने वाला काम होता है, वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स करते हैं। और आपको पता है कि अभी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जनरेट हो रही है और इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए आपको एक्सपर्टाइज चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो मास कम्युनिकेशन में और इनमें हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिसेंटली आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना होगा कि देयर इज नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इन द बिजनेस। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का जो इंटेक है वो इकोनॉमी में बहुत बढ़ता जाएगा और सरकार का काम जो होगा सिर्फ रेगुलेटर और फैसिलिटेटर का रहेगा। तो इसके लिए इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है वो हैंडल करती है और गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन का करने का काम करती है। तो अगेन इसमें हायर स्टडीज चाहिए होता है। ट्रेड्स होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनल ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड होता है। तो वर्ल्ड WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर कुछ कोर्स होते हैं जो इंडियन ट्रेड सर्विस के लोग इसमें कोर्स करते हैं। पोस्ट एंड कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विस है, इनके सामने अपने चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी रिसेंटली पेमेंट बैंक जो आया था, तो वो इसी सर्विस के ऑफिसर्स का एक आइडिया था जिसको इम्प्लीमेंट किया था। इंडियन फॉरेन सर्विस, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस, क्योंकि इंडिया की जो भी इमेज वर्ल्ड लेवल पे जनरेट होती है, मोस्टली इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स ही इसको टेक केयर करते हैं। क्योंकि 2 कंट्री के बीच में ये कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, डेलीगेशंस को हैंडल करना होता है, वहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना होता है, इंडियन कल्चर को प्रमोट करना होता है, तो ये सब इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स करते हैं। और जो डायनेमिक्स हैं वर्ल्ड में वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। चाइना का इतना राइज हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करना इट्स रियली टफ जॉब फॉर एकेडमिक्स पर्सन। तो ये लोग अपने हायर स्टडीज ऐसे ऐसे डिफरेंट फील्ड में करते हैं। और जो लास्ट के 10 to 15 ईयर्स ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक होता है। कुछ ऑफिसर होते हैं जो चाइना एक्सपर्ट होते हैं। अभी जैसे जो अभी वर्तमान में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है S. जयशंकर जी, वो पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, अभी फॉरेन मिनिस्टर है। तो उनका कहा जाता है कि यूएस और चाइना के एक्सपर्ट है, और शायद ये एक वजह रही होगी उनको फॉरेन मिनिस्ट्री देने का, क्योंकि ये 2 हैं जिनके साथ इंडिया के अभी सबसे जो रिलेशन है बहुत डायनेमिक है। तो इस फील्ड में उन्होंने एक्सपर्ट किया, JNU के प्रोडक्ट हैं, उन्होंने बाद में बहुत सारे स्टडीज किए हैं। इंडिविजुअल ऑफिसर्स की इतनी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिली नहीं, क्योंकि उनकी कंपाइलेशन एक जगह नहीं है। IAS ऑफिसर्स का एक जगह कंपाइलेशन है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो गूगल पे टाइप करना IAS एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड समरी। तो वहाँ पे आप किसी भी IAS ऑफिसर्स के पूरा करियर ग्रोथ आप चेक कर सकते हो कि उन्होंने किस किस मिनिस्ट्री में क्या क्या काम किया है, कौन कौन से कोर्सेज किए हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग की है, वो उन्होंने काफी तरीके से मैनेज किया। लेकिन बाकी सर्विसेज में ये इन्फॉर्मेशन इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये एक ऑल इंडिया सर्विस है, जैसे मैंने पहले किया, लेकिन ये एक नोडल मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उसी के अंदर ये चीजें करती है। और इसके आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इश्यूज है, यूएस कभी चाइना के उसमें लूप में आते हैं, पेरिस क्लाइमेट में कभी बाहर चले जाते हैं। तो इन चीजों को किस तरीके से आप हैंडल किया जाए, जो ट्रेड होते हैं, इलीगल ट्रेड्स होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए आपको मास्टरी करनी होती है। तो इन सब के लिए आपको एक हायर स्टडी चाहिए होता है। अब ये चीज हो गई कि भाई इतना होने के बाद में अब आपको ये अपॉर्चुनिटीज आप सर्विस में रहते करोगे कैसे। इसके लिए भारत सरकार ने एक स्टडी लीव का कॉन्सेप्ट दिया है कि आप सर्विस में रहते रहते ऐसे कैरियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने जो काफ़ी लंबा इसका नोटिफिकेशंस था, तो मैंने उसमें से एक पार्ट को लिया है जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकूं कि अगर आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आपका 2 साल का प्रोबेशन होता है, जो शुरू के 2 साल होते हैं वो भी काउंटेड है, यानी कि 3 साल की रेगुलर सर्विस के बाद में 2 साल प्लस 3 साल 5 साल की रेगुलर सर्विस के बाद में आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो। शुरुआत में 1 साल का लीव मिलता है और वो अब एक्सपेंड हो जाता है 2 साल के लिए, और डिपेंड करता है कि वो 5 साल तक भी चला जाता है। तो यहाँ के बाद में आप देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को प्रमोट कर रही है हायर स्टडीज के लिए। और ये लीव है कंप्लीटली पेमेंट लीव होती है, आपको अपनी पूरी सैलरी के दौरान मिलती रहती है। और कुछ केसेस के अंदर अगर सरकार को ये लगता है कि जो कोर्स आप करने जा रहे हो वो भारत सरकार के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो निश्चित रूप से वो उसका पेमेंट भी करती है। मतलब वो जितना आपका पूरा खर्चा होगा, पूरा खर्चा भी गवर्नमेंट उठाती है।
बट मोस्टली केसेस के अंदर ऑफिसर बियर करते हैं। अगर शॉर्ट कोर्स होता है तो वो गवर्नमेंट कर लेती है, लेकिन लॉन्ग कोर्स के लिए ऑफिसर बियर करता है। लेकिन 2 साल का कंप्लीट लीव जो मिलता है वो भी अपने आप में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस है इसके अंदर कि आप अपनी एक बॉन्ड भर के जाना होता है कि आपको जो भी कोर्स करके आ रहे हो वो करके कंप्लीट करके आपको 3 साल फिर भारत सरकार में काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जो भी बॉन्ड अमाउंट था वो आपको देना पड़ेगा भारत सरकार को। आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर कैडर के एक IAS ऑफिसर थे, वेरी पॉपुलर नेम, मिस्टर साफ एजल। तो वो हार्वर्ड से ही कोर्स करने गए थे और वहाँ से आने के बाद में ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। हालांकि उनका रिजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बट अगर वो एक्सेप्ट होता है और वो 3 साल की सर्विस नहीं करते हैं तो फिर उनको बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा भारत सरकार को। और लास्ट के 3 साल में आप नहीं कर पाओगे अपनी सर्विस में, कि कोई सोचे कि मुझे 57 ईयर्स में 58 ईयर्स के अंदर कोई कोर्स करना है, तो फिर उसके लिए स्टडी लीव नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये कोर्स करके आएंगे तो फिर भारत सरकार के लिए उतना काम नहीं कर पाएंगे। सो समरी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो हो रहा है, और ऑलमोस्ट हमारा 47 मिनट का सेशन हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि हम सेकंड पार्ट में जा पाएंगे। तो समरी है, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, मोस्टली जिनके अंदर कोर्सेज किए जाते हैं मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्पेसिफिक एरियाज के अंदर। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब जनरल एरियाज में करते हैं। जैसे मैंने IIT से ग्रेजुएट होने के बाद में हिंदी लिटरेचर के अंदर MA किया। जब मैं चेन्नई में पोस्टेड था, चेन्नई कस्टम्स में, तब मैंने ये सारा कोर्स किया था और उसने प्रिपरेशन में मेरी हेल्प की। और अगर कल को भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिसर जिसको वो नॉमिनेट करते हैं कि UNO के अंदर हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए अपना जो भी मत है वो पेश करे, तो हो सकता है कि उसके अंदर मैं एक एलिजिबल ऑफिसर हूँ। और मेरा प्लान भी आ गया मुझे हिंदी लिटरेचर के अंदर PhD भी करने का, तो आई एम प्लानिंग इन दैट डायरेक्शन। और फिर ये कुछ कोर्सेज हैं जिनको मैं पहले डिस्कस कर चुका था। नाउ बॉल अगेन इन योर कोर्ट। Any questions related to this topic? "48 minutes over or more? Any question?" Participants, yes, now a platform is open for you to raise any questions. Though sir has, elaborately explained many things, hardly there is any scope for this question, but still doubts can be there. क्वेश्चन दो ही कंडीशन में नहीं आते हैं, या तो हमें सब कुछ पता हो या कुछ नहीं पता हो। तो Not like that, sir, but you have elaborately, you have given hardly any scope for these things. In between also you have settled many queries. It was a very these things. if there is no query, then yes, sir, please. One should not understand learning continues throughout the life. That is the important thing. Not that after becoming an IAS, one should not, add further values to his qualification. Adding values to the qualifications gives a lot of weightage to the career prospects of the individuals. So learning should never stop. Even when you're not aspiring for IAS or other thing, but learning should never stop in life, because life never stops teaching you. Hello. Yes. So okay. Yes. Should we prepare for higher education after UPSC, or we can just have our service? Let's talk about the Fulbright Humphrey Fellowship. Sandeep, I am not aware right now about this Fulbright Humphrey Fellowship, but definitely I will let you know about this. बट प्रगति क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल। आज की पूरा टॉक इसी पे था कि हमको अपना जो स्टडी है वो रोकना नहीं चाहिए, और रोकना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड का आप जितना नॉलेज इस स्टेज पे होता है उससे उसको पूरी तरह से जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको जस्टिस करना है, आपको प्योरली जॉब सेटिस्फेक्शन रखना है, तो निश्चित रूप से आपको हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए। और हायर स्टडीज का ये मतलब नहीं होता कि आप 2-3 साल के लिए सर्विस से पूरा ब्रेक ले लिया और आप पढ़ने जा रहे हो। जैसे मैंने आपको इग्नू के बारे में बताया कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत छोटे छोटे 6 महीने के या 1 साल के कोर्सेज है,
उसमें वो स्टडी मटेरियल आपको भेज भेज देंगे, कुछ ऑनलाइन क्लासेस होगी वो आप ऑफ टाइम में देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस होती है और आप उनके एग्जाम देके उस सर्टिफिकेट ले सकते हो और नॉलेज ले सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है एग्जाम पास करना है, सर्टिफिकेट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इकट्ठा करना है। लेकिन आप अगर डायरेक्टर के लिए या फिर जॉइंट सेक्रेटरी के लिए जब भी अप्लाई करोगे तो आपका सीवी में देखा जाएगा कि आपने सर्विस में आने के बाद में क्या किया है, तो वहां फिर काफी चीजें मायने कर जाती है कि एक ऑफिसर है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये जज करना बहुत मुश्किल होता है कि मतलब आपको वो चीज आती है कि नहीं आती है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है, जैसे सिंपल है कि आपके पास में बीटेक का डिग्री है, तो ये माना जाता है कि आपने इंजीनियरिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास में है और आप उस पे अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। बट ये कि एरिया बदल सकता है, जैसे आप मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर साइंस में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और बाद में इकोलॉजी में उन्होंने पीएचडी किया, तो कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड है, तो वो चीजें बदल सकती है। Sir, as it is simple perception that life after UPSC is very much hectic. You can about it and how should we mentally prepare for education? That's a very much relevant questions and very good questions, और ये अक्सर ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रेनिंग होती है 2 साल की ट्रेनिंग मोस्टली इसीलिए रखी जाती है कि एक जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है कि वो सिखाया जाए आपको। तो जैसे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल्स होते हैं ट्रेनिंग के दौरान, उसके अंदर आपको कुछ ऐसी हॉबीज सीखने के लिए मोटिवेट किया जाता है जो अभी तक आपने नहीं किए है। वो म्यूजिक वाले पार्ट से हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, हिंदुस्तानी वोकल्स हो सकते हैं, कार्नेटिक म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है। स्पोर्ट्स के अंदर आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप स्पोर्ट्स एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पे काम किया जाता है, वो चीजें आप कर सकते हो। बीच में कई सारे लीव होते हैं। आपको एक और चीज मैं बताता हूँ कि एक स्पेशल कैजुअल लीव होती है। जैसे नॉर्मल कैजुअल लीव होता है, 7-8 कैजुअल लीव मिलती है साल भर के अंदर, लेकिन एक स्पेशल कैजुअल लीव होती है, उसमें 30 डेज का लीव मिलता है फुल्ली पेमेंट। उसमें आपको माउंटेनरिंग अगर आपको करना है या फिर आपको किसी सोशल कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर एक्सपर्टाइज करना है, तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। तो उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन को एम्पैनल्ड कर रखा है, तो वो अगर कोई भी कोर्स करवाते हैं तो वो कोर्स करने के लिए आप जा सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से चीजें रखते हो तो आप बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हो। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग म्यूजिक सुन के अपने स्ट्रेस को खत्म करते हैं, तो कई लोग हैं वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करके अपना जो बर्डन है, टेंशन, उसको खत्म कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये रहता है। और हायर स्टडीज अगेन इज नॉट अ बर्डन, क्योंकि देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, मोस्टली आप में से जो लोग हैं इंजीनियरिंग में अपनी चॉइस से नहीं आए होंगे, पढ़ने में अच्छे रहे होंगे, घर वालों ने बोला कि मैथ्स ले लो, मैथ्स के बाद में बेस्ट ऑप्शन जो लगता है वो इंजीनियरिंग लगता है, वो आ जाता है। तो ग्रेजुएशन तक मतलब है कि हो सकता है कि हम किसी और के कहने पे या फिर हमारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी इसलिए हमने वो कोर्स कर लिया, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर स्टडीज हमेशा अपने इंटरेस्ट पे होती है। जैसे मेरे को किसी ने नहीं बोला कि हिंदी लिटरेचर में तुम पीजी करो। सिमिलरली जो मैंने ऑफिसर्स के नाम बताए उनमें से उनको किसी ने नहीं बोला कि आप इकोलॉजी में पीएचडी करो। तो अगर उन्होंने इकोलॉजी में पीएचडी किया है तो इसका मतलब है कि ये उनका इंटरेस्ट है। और जब आपका पैशन और प्रोफेशन सेम हो जाता है तो मुझे लगता नहीं कि फिर हेक्टिक होता है या फिर बर्डन आता है या फिर प्रेशर आता है, फिर आपको उस चीज में मजा आने लग जाता है और आप जो काम करते हैं उसका इंपैक्ट होता है। अगेन मैंने बताया कि सिविल सर्विस का बेस्ट पार्ट जो होता है क्या होता है कि इसका इंपैक्ट होता है वो बहुत लार्ज होता है। तो अगर आप ऐसी पॉलिसी बनाते हो जो अगले 50 साल 100 साल तक भारत सरकार को या फिर आने वाले लोगों को, जनरेशन को मतलब फायदा करे, तो निश्चित रूप से आपके लिए सेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा रीजन होता है। कैन सिविल सर्वेंट स्विच फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर बेस्ड ऑन हायर एजुकेशन? सर्विस स्विच नहीं होती है लेकिन काम स्विच हो जाता है। जैसे आपको मैंने बताया कि इवेल्युएशन होता है, तो 9 साल के बाद में बाकी सारे सर्विसेज को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भारत सरकार के लिए किसी भी मिनिस्ट्री में काम कर सकते हैं जो एक आईएएस ऑफिसर करता है। जैसे मोस्टली ये माना जाता था आज से 10-15 साल पहले तक कि जो भी अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी वो सिर्फ आईएएस बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 9 साल के बाद में किसी भी सर्विस का कोई भी ऑफिसर उस फील्ड में जाता है। सपोज कल को एजुकेशन के अंदर मैं कुछ स्किल ऐसी अटेंड कर लेता हूँ कि जिससे मैं एजुकेशन में जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है हमारी, उसके लिए मैं बेटर पॉलिसी बना सकता हूँ, तो वो मुझे अंडर सेक्रेटरी के लिए, डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स करते हैं। जैसे जो मैंने एक इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के ऑफिसर राजू सरन सर का मैंने आपको दिखाया था, तो वो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के हैं लेकिन वो आईएमएफ में काम कर रहे हैं, तो वो
भारत सरकार की कैपेसिटी पे काम करता है, जहां मोस्टली इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर या आईएएस जाते हैं, तो वो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के गए क्योंकि उन्होंने अपना वैसा एक्सपर्टाइज उन्होंने कर लिया। तो सर्विस आपकी सेम रहती है। जैसे कहते हैं ना कि भाई आपका कैडर चेंज नहीं होता, जैसे राजस्थान कैडर का कोई ऑफिसर है तो उसका कैडर चेंज नहीं होगा, लेकिन वो भारत सरकार के लिए डेपुटेशन पे चले जाते हैं। तो 5 साल 7 साल कई कई बार 15 20 साल तक लोग डेपुटेशन में चले जाते हैं। अगेन बात ये कि कोई भी सरकार होती है उसको अच्छे ऑफिसर चाहिए होते हैं। अब वो किस सर्विस है ये मैटर नहीं करता बहुत ज्यादा। जैसे आपने एक थोड़े दिनों पहले 2016 या 17 के अंदर एक रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था मिस्टर संजीव चतुर्वेदी। आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना हो उनको और या नाम सुना हो। तो वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं और उनको किस चीज के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला कि जब वो एम्स के अंदर चीफ विजिलिंग ऑफिसर थे, सीवीओ चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे, तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार का मतलब उजागर किया था। तो इस चीज के लिए बोल्डनेस के लिए उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। तो अगर आप उनको देखोगे तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और एम्स का कोई लिंकेज नहीं है, एम्स का और सीवीओ का कोई लिंकेज नहीं है, और सीवीओ का रमन मैग्सेसे अवार्ड का कोई लिंकेज नहीं है। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप अपने फील्ड को कहां तक ले जाते हो। That is not relevant, but wish that you could guide us how to crack civil service in future. Definitely इसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर होने वाला आपका इसके बाद में 1:30 बजे। और मिस्टर शफीन है, आईपीएस है, अभी हमारे साथ वो एकेडमी में भी है, तो वो काफ़ी अच्छा इस फील्ड पे बोलते हैं। और उन्होंने पूरा टॉपिक उनका यही रहेगा कि हाउ टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। बट इसको 2-5 मिनट में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं कहूँगा कि आप उनसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका वो सेशन कंप्लीट होने के बाद में ये क्वेश्चन रहेगा, बट डेफिनेटली अगर फिर कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम निश्चित रूप से इस पे बात करेंगे। Again question from Sandeep. Higher education provided in the service training academy such as Hyderabad and Labasana. Yes, definitely. मैंने आपको लबासना का एग्जांपल दिया था कि वहाँ पे ट्रेनिंग होती है आईएएस की और फाउंडेशन कोर्स होता है सारे सर्विसेज का। तो जब वो अपने 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करते हैं उसी टाइम पे उनको हायर एजुकेशन का जो एमए का डिग्री होता है वो जेएनयू से उनको मिल जाता है। तो सर्विस में रहते रहते उन्होंने जेएनयू का कोई एग्जाम नहीं दिया, ना उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया जेएनयू का, ना उन्होंने जेएनयू का जो फाइनल एग्जाम होता है एमए के लिए वो दिया। बट उनका जो काम है जो लबासना ने ही पूरा हैंडल किया है उसके बेसिस पे भी उनको एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जेएनयू मिल जाता है। सिमिलरली मैंने हैदराबाद का बताया आपको, जो एनपीए है हमारा जो नेशनल पुलिस एकेडमी, तो अभी वर्तमान में उनका उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन है। और उसके बाद में वो अभी नालसार के साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन किया है। तो एमबीए इन पुलिस मैनेजमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी करवाता है और लॉ के काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो नलसर यूनिवर्सिटी उनको अब आगे मतलब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स करवाएगा। तो ऐसा लगभग हर यूनिवर्सिटीज मतलब जो ट्रेनिंग एकेडमी है उनका होता है। जैसे मैंने आपको इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का बताया, तो वहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है आईएमसी दिल्ली के अंदर, तो वो लोग उनको हायर एजुकेशन की डिग्रीज देते हैं, मतलब एमए इन मास कम्युनिकेशन और पीएचडी के ऑफर भी देते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी ट्रेनिंग एकेडमीज हैं उनको ऐसा देते हैं। आई एम फ्रॉम सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। सो मेरा कैडर कुछ नहीं है और मैं मतलब भारत सरकार के एक्सपेंडिचर जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर उसमें काम करता हूँ। और 2018 के अंदर मैंने इंडियन ये सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक किया था और 19 बैच बोलते हैं, 1 साल आगे का बैच चलता है। और 2019 में मेरा सिविल सर्विस एग्जाम हुआ था, बट मेरा सर्विस अपग्रेड नहीं हुआ था, इसलिए मैं इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस को ही रिटर्न किया। ओके, इट्स अबाउट 1 आवर कंप्लीट। और ये मोस्टली हमारा जो सेशन है वो फर्स्ट पार्ट पे ही खत्म हो गया। हाँ, बस मैं लास्ट का 1 मिनट और बोलना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि अगला सेशन पूरा आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पे होगा। लेकिन 2-3 चीज़ें जिन पे मैं मेजर फोकस करना चाहूँगा कि ये एक पार्ट है जो मैंने नोटिफिकेशन से लिया है कि जिसमें मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी की एक कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने ये बॉक्स में रखा है इनको आप कम से कम 10-12 बार पढ़ें, इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग करें, क्योंकि पूरा कोर और क्रक्स जो सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना है, जो प्रगति ने पूछा भी था कि कैसे करना है, तो ये पूरी डिमांड है। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए तो फिर एग्जाम क्रैक करना इज नॉट टफ। वन थिंग इज दैट
वेल जो अंडरलाइन किया है मैंने, आप अगर उसको देखिए, वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है कि लोग बोलते हैं 10 घंटे पढ़ना होता है, 15 घंटे पढ़ना होता है। यूपीएससी ऐसा नहीं कहती है। यूपीएससी कहता है कि हमें एक वेल एजुकेटेड पर्सन चाहिए जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर कर दे विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। और आप ये खुद से क्वेश्चन कीजिए कि कैसे संभव है ये चीज, तो वो चीज आप कॉलेज के अंदर कर सकते हैं। तो अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा इन चीजों के। और एक ये चीज है जो इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट होता है यूपीएससी का, और यूपीएससी का एक्सपेक्टेशन, ये दोनों स्लाइड्स हैं ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन से मैंने ली है। और जो मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा जो कह सकते हो कि कोर है पूरे सिविल सर्विसेज का। ये क्वालिटी जज होती है, और यही क्वालिटीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर आप इनको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, आप अपने प्रोफेसर से बात कर रहे हो, आप अपने घर पे बात कर रहे हो, आप कोई भी डिसीजन लेते हो, ये सारे सातों क्वालिटीज आपके डिसीजन में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है बैलेंस ऑफ जजमेंट। हम कई बार आर्ग्यूमेंट करते हैं, सरकार की किसी पॉलिसी पे कर सकते हैं या अपने दोस्त के किसी बिहेवियर के बारे में कर सकते हैं। हमारा जो जजमेंट है वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी इज वेरी मच पॉपुलर। अगर आपको बहुत हाई पोस्ट पे जाना है तो ये आपके लिए सबसे बड़ी क्राइटेरिया होता है इंटीग्रिटी। और ये आप अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रिटी इज नॉट ए थिंग कि आप कोई किताब पढ़ोगे और आप सीख जाओगे। तो ये सातों क्वालिटीज है। अगेन टाइम का लिमिटेशन है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे दोनों स्लाइड्स को आप कम से कम 10 से 15 बार पढ़ें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं लास्ट में अपना ईमेल एड्रेस आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें आप हम पूछ सकते हैं, इस पर डिस्कस कर सकते हैं। और आगे अगर ऐसा कोई भी सेशन होगा तो उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये है जो मेन क्रक्स है। नाउ दिस इज माय फाइनल टेक अवे। आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स मोर। रीडिंग हैबिट आपको बढ़ानी होगी। एक फेमस सेइंग है, जितने भी वर्ल्ड के टॉप सीईओज हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, फिर भी कहा जाता है कि 200 पेज की वन बुक इन ए वीक वो पढ़ ही लेते हैं। तो एक मान सकते हैं कि मोर देन 50 बुक्स ऑफ 200 पेज, अगर वो 400 की है तो वी कैन डिवाइड इनटू 2 वीक्स। तो ये वो पढ़ते हैं अभी भी। और ये मैं बिल गेट्स का बता रहा हूँ, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन और बिगेस्ट कंपनी को हेड कर रहे हैं, इतना एनजीओ चलाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उनके पास में कितना कम टाइम हो गया। अगेन 24 घंटे उनके पास है, बट इसके बावजूद वो 50+ किताबें एक साल में पढ़ लेते हैं। तो रीडिंग हैबिट आप बनाइए। 3 से 4 फ्रेंड का आपका एक ग्रुप होना चाहिए जिनका आपका मेंटेलिटी सेम हो एग्जाम्स के लिए भी और इश्यूज के प्रति भी, और वो मिल के आप तैयारी कीजिए। और ये मेरा एक आपसे सीरियस रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन में आने वाले हो या कुछ लोगों ने प्रिपरेशन कर दी है, अब से आप हार्ड कॉपी नोट्स मत बनाइए, क्योंकि हार्ड कॉपी नोट्स को कैरी करना, एडिट करना इज रियली टफ जॉब। आप सब लोग टेक्नो सेवी हैं, और सॉफ्ट कॉपी में आप नोट्स बनाइए। और उसका फायदा ये होता है कि एक व्यक्ति के नोट्स है दूसरे व्यक्ति के काम आ सकते हैं। और आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा माहौल बना सकते हो कि एक ग्रुप बन जाए जो कंटिन्यूअसली हर साल 2-3 सिविल सर्वेंट बनते जाएं और पीछे वाले लोगों को गाइड करते रहें, और उनके नोट्स ही हमेशा काम आते रहें। ऑप्शनल में विशेषकर ये हेल्प करता है कि अगर जैसे सपोज किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अच्छे नोट्स बना लिए हैं और उनका एक बार सिलेक्शन हो गया, तो कंटिन्यूसली हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सिविल सर्वेंट निकल जाए। तो लैपटॉप और एवरनोट एक अच्छा सॉफ्टवेयर है आपको नोट्स बनाने के लिए। एंड दिस इज द माई हम्बल रिक्वेस्ट। आप पूरे डिस्कशन से कुछ ले पाते हो या नहीं ले पाते हो, इट इज अ डिफरेंट इश्यू, बट ओनली रिक्वेस्ट इज दैट जो इस स्लाइड के अंदर मैंने सिविल सर्वेंट के ये क्वालिटीज आपके सामने रखी हैं, जो यूपीएससी के नोटिफिकेशन से हैं, यही क्वालिटीज इंटरव्यू में जज होती है, यही क्वालिटीज एथिक्स के पेपर में जज होती है, यही क्वालिटीज एसे के पेपर में जज होती है, और इनफॉर्मली हम कह सकते हैं कि यही सारे क्वालिटीज आपके जीएस के बाकी पेपर्स में भी जज होती है। तो अगर आपने इन सातों क्वालिटीज पे मास्टर कर लिया, और अगेन मास्टर का मतलब होता है ये आपके हैबिट में आना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। हमारी जो बोलते हैं टॉक वाक विद द टॉक जो होना चाहिए, कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये तभी होगा जब इन सातों क्वालिटीज को आप बाई हार्ट कर लोगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thanks a lot, sir, for giving lot of guidance to the faculty members how to enter in the administrative services. So you wait for a minute, because Sankara Institute of Technology, they want to honor you by way of memento. It will be shortly coming on the screen.
Thank you very much, sir. And yes, sir, it has come. It is our love and respect to you for your well-informed deliberations. Thank you very much, sir. And again, I would like to thank RTU and Sankara Institute of Technology. And special thanks to Professor Surendra Godaraji and Sikandar Khanji for coordinating. So thanks a lot, sir. Thanks. Thank you very much. All the best, all the participants. And to the participant, our next sessions will be at 1:30. We are breaking for about 1 hour. So these sessions at 1:30 will start at 1:30. So all are requested to be in time. In the meantime, thank you very much.
Can anybody respond for the video and audio connectivity? Yes, good afternoon, sir. I am Dr. Rathi from Shankara Institute of Technology. We welcome you here. Yes, can you? Yes, yes, we can Yeah. also get you. So, can we proceed? Can we proceed, sir? Yeah, please. Before that, I will just give a brief of you to the participants. So, good afternoon to all the participants. Now, this is the third session of the day today. With us is Safin Hassan, IPS. Some of our participants must know, if in case they know it, before independence, one letter was sent to Mohandas Karamchand Gandhi from Australia to Sabarmati Ashram. The letter is still there. I am not talking about the contents of that letter. The address in that letter was Gandhi, India. And that letter he received only with this address, Gandhi, India. Now, Safin Hassan is IPS officer, youngest IPS officer, does not require any further profile. So in short, your entire profile covers. Thank you, sir. Sir, welcome you again here. The topic of our is how to civil services. And the duration of this session is 1 hour. And if you're comfortable to you, in between, you can take questions or some queries from the participants, or you can leave 5-10 minutes before end of sessions for question answers. Sure, sure. It will be better. It will be better if you can touch, because most of the students, they get very disappointed, dejected after making 1 or 2 attempts in civil services. How to, manage their level of stress, and that level of stress also continues for a long period. That also becomes very, these things on their part. So again, sir, we welcome you. Shankara Institute of Technology welcome you here. So now over to you. You can start your session. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Ranbir Rathi sir, for your kind words and introduction of mine. I would appreciate the fact that if some of you can, switch on your videos, it would be easy for me to interact, in a sense that I will be having, assurance that I am being heard and the connectivity is going fine. That's the first thing. Second thing I would like to mention here is that I'm guessing that it must be a post-lunch session, right, sir? Yes. But participants are active. They will interact with you, sir. Yeah. Yes, yes. Because probably They're all young people. I am the They're last all young one people. Yeah, I am the No, last no, one to it does switch on not my make a videos difference. during our classes. So that's why I would, request some of the participants to switch on their videos so that I can have a good interaction. Now, the topic given to me was how to crack civil services. Before touching upon that particular thing, I would like to, dwell upon why to join civil services. The basic idea behind for me to join the civil service was something I wanted to do, something where I am paid for what I like to do. So when you are thinking about your future, your career, you must have 2-3 questions in your mind, that what you actually want to do, what you like to do, and what are the things. Agar if the government says that you have to do 24 hours and we are not going to pay, and still if you feel that okay, I want to do that particular thing, I guess that would be your career. So this was the answer for me when I decided to join the civil services. Apart from that, few days back I had a chat with one of the aspirants from Delhi. uh, she's IIT Delhi pass out and working with Microsoft, and she has one question, that whether she would like to, should she continue with the civil service, the Microsoft job, or should she appear for the civil services. So I asked her 2-3 questions, that okay,
what would you love to do when you join the corporate job? There will be around 5, 10, 15 people working under you. You will have fixed working hours, you have a good family life, and you have your comfort. Okay, apart from that, on the other side, when you join the civil services, the first post which you get, probably if I talk about IAS and IPS, the first post which you get as an assistant collector or assistant superintendent of police, if I talk specifically about myself, my first posting is in ASP Bhavnagar. The moment I joined, I could realize that there are 500, more than 500 staff working under me, and my one sign was affecting the security of almost 13 lakh people. So this is the stark difference between the government job, specifically civil service, and the corporate job. Yeah, the payment might not be good. You might feel that you deserve much more better, but it's a government, so you have to adjust to that level of income. But at the same time, the prestige and power which you receive during in civil services is uncomparable. So that's where you have to make a choice: a comfortable family life with fixed working hours in a cabin, to a 24 by 7 job with power, prestige, and everyday new challenges coming up in your life. So that's what you have to decide, that whether you want to join the civil services or not. That's the first thing. Second thing, by answering such questions, you will have that conviction to work hard for getting into the civil services, cracking the UPSC exam, and that will make you go for a quite a long period. Now, I hope the previous speaker, my dear colleague Raju, might have covered the basic structure of the civil services. If anybody can respond. Yes, sir. He has covered. Very well covered. Basic concepts of yes, the I am things. presuming. And whatever, yes. Yeah, thank you, Pragati, for your answer. I am assuming that you are clear about prelims, mains, and interview. So what I will be discussing is what are the requirements which are beyond the books. Okay, uh, we all know there is three stage of exam: prelims, mains, interview. These are the topics which are being asked. This is the syllabus, and this is what you need to prepare. But before joining or before starting the preparation, what are the fundamental requirements which you need to focus in advance? The very first thing is what I talk about is clarity. Why actually you want to join civil services, right? With this conviction, when you start the preparation, you have something else coming ahead, is the family support or not supporting you. There will be many of you who might be thinking to join the civil services, who might be thinking to take a drop after your college for 1 year, 2 year, 3 year for preparation. But then comes the very big uncertainty, which the UPSC, which is the inherent part of this exam. The first attempt में होगा नहीं होगा, second में होगा नहीं होगा. That's where the major problem arises for all the aspirants. That the parents might be forcing you to take up a job. Society might be telling you that ये हमारा काम नहीं है, इसके लिए अलग लोग पैदा होते हैं जो सिविल सर्विस करते हैं, and so many other things, right? That's where you need to put your conviction and confidence above all. You have to make a choice. When I was in final year of my college, I was training and placements coordinator as well for my department. So I had that opportunity to sit for the interview. At the same time, my financial condition was something where I had to take a job. Otherwise, it would be very problematic for me to answer my parents that why I am not earning yet. So these were the difficult question I was facing. But since I was determined enough that okay, I want to give myself 1 year for the preparation and 1 year for the exam. इसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो देख लेंगे. That was the reason that I didn't sit for a single interview during my final year. I sometimes your friends getting job, a very good package, and some people getting admission into foreign universities by clearing CAT or GRE. So that's where कभी कभी you feel कि okay कर लेना चाहिए नहीं करना चाहिए. That's where your determination will play a major role. Since I'm talking to engineering students, this is a major issue I have noticed, that for the 3 years of our engineering, we are actually not concerned what we want. In the final year, we start sitting for the companies. When we realize that okay, companies अच्छी नहीं आ रही या अपना नहीं हो रहा है, then we'll start preparing for GRE CAT.
because our friends are preparing. Then if you can't kill, if you think that you are not good at GRE and CAT, then again you start preparing for GATE. When you feel that okay, GATE maybe chances come hai, GATE ka result nahi hai, then again we'll start looking for a job or we'll start thinking about UPSC. So this should not be there. It should be in the first year or second year of a college where you have to decide which path you want to take. So accordingly, you can meet the like-minded seniors, the like-minded people, and you can chart your path. So whoever are there who are in the initial years of their engineering, I'll just request you to decide what you want to do in the first or second year, and then don't give a second thought about it. You build your conviction about that particular choice and start working for it. I had few friends who were very in the first year of college. They said that okay, they want to go to foreign university. Some they wanted to say that okay, they want to do MTech, and I could see them doing that very smoothly throughout 4 years. And in the final year, they had no difficulties choosing that path. So to all the engineering colleagues over there, I would just request you to decide what you want to do at this particular stage. Now, how to convince your parents and how to convince society? See, society you don't need to convince at all. Okay, even if you start saying them, they'll come up with 100 arguments. When I decided to go for UPSC, people around me came because there was one aspirant in my village who used to prepare since 2013 for UPSC, and she was not able to make it in 2018 also, 2017 also. So everybody who comes to me will only give me the example of that particular aspirant. Ki because she is not able to do it, you should not attempt because it's a very tough exam, and nobody in our village has ever cracked it, right? So if they are coming up with these excuses, just give one answer to them. Definitely not explicitly, but in your mind, that your thought process and your thinking is limited up to this. I'm not going to surrender because of that. If this attitude will continue throughout your preparation, it will help you a lot to deal with your society, to deal with your relatives, to deal with your negative friends, and to deal with your seniors who have given already 5 6 attempts, right? So try to make sure that those things should not affect you. That's the first thing. Second thing about parents, yes, if your financial condition is not much good and you think that that is not going to happen, I would recommend you to go for a job, make a stable career for 2 years, 3 years, be financially independent, and then again you can start preparing for UPSC. I have seen many of my batchmates in IPS and IAS who have worked in the corporates for 1 year, 2 years, 3 years. It brings you experience, it brings you financial security as well, and it brings you once you leave the job which was paying you very handsomely, it will give you added pressure to perform better. uh, I'll it is a double-edged sword though. I have a friend in IPS who was working in Samsung. Right, he's IIT pass out. He worked in Samsung for 2 years and then he left the job. Not coming from a very good family, but he had that. You had to face this thing that after getting passed from IIT and getting very handsome amount in salary, he left the job, and then he couldn't clear prelims for the first attempt. He couldn't clear prelims in the second attempt as well, but he was all India ranked 13 in his third attempt. So you never know which attempt will open the doors of civil services for you. But yes, that determination, just imagine putting yourself into his place, that what he might have faced from parents, from society, from family. You will be lucky enough if you have supporting parents. If they are not supporting you, try to convince them. Try to, if you are determined about your goal, try to convince them. If even they are not convinced, I would suggest you to stick to your goal. Once you will be successful, they will be the people who will be the most proud of you, right? So these are the issues which you'll face before even starting your preparation, right? Apart from this societal issue and all, there is one more thing which confuses all the aspirants. Is so many myths going around about UPSC and civil services. It is one of the toughest exam. Anything under the sun can be asked. It's not a cup of tea for everybody. You need to be topper in your schools throughout or college throughout to be into civil services.
You must be, having a good coaching institution to clear the civil services. Uh, you'll have to work 20 hours a day every throughout the year to get into service. So all these, I would say, are myths. What I would recommend you is, if you are planning to start the preparation, I would recommend you to go on YouTube and see the toppers talks about who have got there are some who have cleared in English. There are some who have cleared in vernacular languages. There are some who have cleared in first attempt. There are some who have cleared in the last attempt. There are some who are coming from a very rich background, and there are some who are coming from very poor background. Uh, so, if you will analyze those 1,000 names which are in the final list, you won't find a single story being repeated. Somebody is coming from a graduation of humanities, somebody engineering, somebody medical, somebody is coming from open school and distance learning education. So, in short, that thing proves that UPSC is a cup of everybody, and anybody who is determined to clear it can definitely do it, right? So just discard all such kind of myths around you, कि ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं. What is needed is your conviction and determination. That's all. That will make the way for you, right? I will not much dwell into my own story, because that's probably 70 or 75% you might be knowing. So I will just take references of them, just to be clear about the facts which I just mentioned. I also come from a very lower middle class family. I have studied up to 12th in Gujarati medium. Uh, I have appeared in UPSC also in Gujarati medium. So the fact I would like to mention here is that prelims you can appear, there is only English and Hindi, but in mains you can write your answers in any language which is mentioned in the Schedule 8 of the Indian Constitution, which generally covers all major languages spoken in India. So I decided to appear in Gujarati, and I did write my entire mains in Gujarati. Coming from a technical background, I have done BTech in electronics and communication. Still, I have given my optional subject was Gujarati literature, right? And I have given my interview in English. Apart from that, I have given Gujarat PCS exam, class one exam also. I cleared that also in the same attempt, first attempt. But what these things prove is that there is nothing which can prevent you from clearing the exam if you are clear. I was clear that because GS part is like, GS gives average scores to everybody. Where you need to perform is in your optional, in ethics, and in essay paper. Now in ethics, essay, and in ethics and essay, if you're supposed to put your thoughts, you're supposed to describe your set of your mindset. I thought I would be in a better position to describe when I write in Gujarati. That's the reason I chose Gujarati and as my writing medium. But I have done the preparation all throughout in English. Uh, some of you might not be comfortable with English. I would recommend you to prepare in English. I have two reasons for that. First is that the very good quality material which is available for civil services is generally in English. Even the newspapers which are suited and fit for civil service preparation are also in English, right? The Indian Express or the Hindu, any one of them you can refer. So that's the first thing. Second thing, if you are not good with English, it will impact your level of confidence. You will have that complex in your mind throughout, that you are not preparing in English and you don't know English, right? It will create issues once you join the service. I'm not saying that you cannot clear in vernacular languages. I have cleared, you can also clear. But what if once you join the civils, maybe in the IAS or the IPS or the foreign service, the real struggle starts after that, right? You have all the classes in English, you have all this experts speakers coming up and speaking in English. You have to deliver certain lectures in English, the way right now I'm doing. So that's where you'll again feel the issue, right? So English, don't take it as a challenge, take it as a part of your personality and try to improve on that.
Since you are in college, you can do it. You have enough time, because I am engineer. I know that we have enough time to watch TV series. We have to watch news, to watch movies, to listen to songs. Try to surround yourself with English. Try to watch the English TV series with subtitles initially, movies with subtitles, and that's how you'll pick up on the language. That is for sure. And regarding the UPSC answers, I already told you that you can write it in any language. Uh, some people might have doubt that once you prepare in English, is it possible to write the answers in some other language? To which I give only one answer, that okay, consider a case that you have gone to watch a movie, which was a Hollywood movie. Let's take a Bollywood movie, okay, which is in Hindi. You have seen the entire movie, and then you come back, and your friend ask you, uh, maybe in Telugu or Marathi, how was the movie and what was the script. You will be easily able to describe him the entire script in Telugu or Marathi. Why? You have seen the movie in Hindi, but you are able to describe in your vernacular language. That means once you are clear about your concepts, it won't be much difficulty for you to, describe your thoughts in some other language if you are good with the language. So that's the language part I wanted to tell you. So, once you start the preparation, the first thing you do is everybody says is this: start with the NCRTs, and I also repeat the same thing, that start with NCRTs. So after dealing with parents, once you decided to start the civil services, and when you deal with the myths, the language is the biggest issue which the aspirant faces, and I get most of the question about language only. So this was my input for the language, right? Apart from that, there are other myths going on about exam itself. You Once you'll go to Rajendra Nagar or Mukherjee Nagar, you'll hear the rumors that ऐसे का पेपर निकल जाएगा, प्रीलिम्स में एक ही पेपर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्ला हो जाएगा, एज रिडक्शन कर रहा है यूपीएससी, अटेम्प्ट्स रेस्ट्रिक्शन कर रहा है. Whatever you are listening, just listen from your one ear and let it went out from another. Unless and until UPSC doesn't notify anything, you don't need to focus on any other thing than your preparation. Okay, that's the second thing. Third thing, make sure when UPSC puts out a notification, you go through the entire notification by yourself or twice or thrice. That's where you will understand what is the requirement, what do they actually look for. This is the exam which I consider the most fantastically designed exam, because it runs for 1 year, and it checks everything apart from the knowledge. It probably checks all the qualities which are needed in an officer. Since start their preparation, probably let's take a 1 year of period. You might be starting in May or June, and you will be appearing in the prelims in coming June, and your result will be coming in April maybe. So it's a 2 year long process. Now imagine what is needed in an officer and what the UPSC is actually testing. It is testing your patience for 2 years, which is needed for an officer. It is testing your decision making power, in the sense that you have ample amount of material available. If you go on Rajendra Nagar or Mukherjee Nagar, you'll find all stalls and shops, with different kind of materials. Now, where the first struggle which we face is deciding what to read and what not to read. To which I'll simply answer that go through the UPSC syllabus at least 5 to 10 times, go through the previous year papers, and then decide which book to look for. Many toppers have suggested many books, and if they have referred those books, that means that all the books are sufficient enough. So how to decide? You go to that particular shop owner, you go through the book, ऊपर से, and then see whether that books actually fulfills your exams needs. If it is fulfilling, then that's the best material you can go for. And once you decide to choose one book, then don't ever think twice on that. Because what happens is, once you, for example, if you take let's say history. Okay, so history, some people will go for Spectrum. Some people might go for Bipin Chandra. Some people might go for Tamil Nadu NCRT books. So once you, for example, you are settled with NCRT, and then you see your friend reading Tamil Nadu, you'll shift to Tamil Nadu, and then once you start Tamil Nadu state books, then you will find somebody else coming up with probably Spectrum, and then you shift to Spectrum, and somebody else will coming with yellow books of Vajira. What to read, what not to read.
right? So stick to one particular book and try to read it for 10 times rather than reading 10 books for one time. That's what the simple submission to this particular question would be. Right. Apart from that, regarding the decision making, so this is a decision you make, right? And you stick to that decision. Apart from patience, decision making, of course, your hardworking nature and smart working attitude will also be tested throughout your preparation. Your hard work, yeah. And one more thing I would like to put in here is that UPSC, probably some people might say that it's a game of smart work. I'd say it's a game of smart and hard work both. So you need to do hard work. I'm stressing on the word hard work, which includes the hard work and smart work both, right? So that's where you need to put your heart into when you are in the preparation. So it checks your hard work, it checks your smart work, as well as it will check your level of confidence. This will be put to test throughout your preparation. Once you are choosing options in your prelims, when you are writing answers in your mains, and when you are facing an interview board, your confidence will be throughout checked. And what that confidence is and where it comes from, probably, when you don't give yourself another option, it comes automatically. When you start making plan B, when you are already in the execution of plan A, you are opening other doors for yourself to give yourself an excuse कि अगर ये नहीं हुआ तो हम वो करेंगे. Don't do that. I have never done that, and that's why I will advise you that if you are making plan A, don't think about plan B. Just focus on plan A. It has to be executed. So that's where your confidence comes into picture. Now, since I have talked about interview, I would like to focus a bit more on personality test. Uh, Probably for me, personality test, it is not an interview, it's a personality test. And let me clear it in the beginning that you might have gone through some social media post कि किसी के पास 7 केले है और 8 लोगों में बांटना है बिना काटे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, या फिर आप जब आ रहे थे तो आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए. आई गेस यूपी बिल्डिंग में 5-6 से ज्यादा है नहीं वैसे. या फिर आप जिस ऑटो में आए या कैब में आए उसका नंबर क्या था. These questions are never asked in the board. Okay, so be clear about this thing. These kind of rumors you should not worry on. Personality test is actually about you and how suitable you are for the service. These all qualities I'm mentioning, they will be put to test again when you are facing a board. See, once you are in the interview room, you must understand one thing, that they are not there to find the mistakes, or they are not there to find the faults in you. They're there to bring the best out of you, so that the government doesn't miss on a potential candidate. So if they are asking you too many questions, they might be searching for one quality. So they might be asking too many questions so that you can come up with that quality. Okay, or they are there to again make it very clear in your mind that they're there to find the best out of you, and not to find your faults. Second thing, it's a personality test in the sense that it's a conversation. Okay, don't take it as an interrogation. Interview, people tend to think that UPSC interview इतना बड़ी चीज है. नहीं, it's just 275 marks. Okay, rest 1700 uh, 75 marks are decided by your mains exam, and you are allocated a service based on your mains and interview. So interview, I would say mains will definitely ensure that you are in the list, and interview will ensure that you get the service of your choice. So accordingly, you have to give assign the weightage to them. It doesn't matter if you can't answer 2-3 questions to them. What matters is how you take and how you handle the loss. Sorry, the tension or pressure of not knowing the answers to them, right? Even they know that these everybody doesn't know everything, but they want to check that if you don't know, then how do you react? Because when you sit in the district on a chair, you will have 50, 60, 70 visitors every day. How to answer them, how to tackle them. There might be some questions जिनके आंसर आपको नहीं पता होंगे. So that's what is being put to test them. So these are the things I wanted to clear about UPSC interview, right? So another question which comes around is whether you should go to Delhi or not for the preparation. I'd say COVID has made the work much easier these days. Everything is available on internet.
So I would suggest you that if you can financially afford and you want that kind of atmosphere around you, you should go to Delhi. But if you can't, there is nothing to worry, because everything which is available in Delhi is also available on internet these days. And now many other centers are also coming up. You can prepare very well sitting at your home also. If you have the resources available, that will also work, right? So Delhi jana chahiye, nahi jana chahiye, ye question I feel that after COVID has become redundant, because the internet and online coaching things. See, we are connected through this WebEx. We never thought that such kind of things will become routine. So that's why technology has made it easy for you to prepare at your home also. During college preparation, karna chahiye, nahi karna chahiye? That's the next question generally people ask. Frankly speaking, I tried doing it in my first year, second year. I don't remember, but then I stopped it in the sense that I knew that I needed a clear-cut 1 year of gap or 1 year of period for me to prepare. At the same time, I didn't want to miss on what is going on in the college. So I would strongly recommend you that don't compromise on your college studies because of UPSC preparation. Because my professor once told me that, what are you doing? What do you want to do? Civil services. Then she's told me that I'll go in more details. But I was an average student in college. So in the first semester, I got 7.32. Then I got 8.02. Then again 7.23. Then 7.8. And like this. So when I was in third year, I was much occupied in my NGOs and all, and not preparing for civils, at the same time giving average attention to studies. So once my professor called me and she said, "What are you up to? What do you want to do?" I'm like, I will do civils, ma'am. I want to join UPS. I want to do UPSC." Then she's like, what are you doing right now about studies?" Nothing, just routine thing. She's like, पास्ट में जो किया है, आई मीन फ्यूचर में कभी ये अफसोस नहीं रहना चाहिए कि यार उस टाइम पे अगर मैंने अच्छे से पढ़ लिया होता तो सही रहता. And that thing changed my attitude about my engineering studies. So then in the third year it was 8.2 and then 9.2, and I got 9.95 in my final semester. And that gave me a kick to my confidence that okay, अगर यहाँ college में top कर सकता हूँ तो I can go and top in the civils as well. So engineering has taught me a lot of things, and I would also suggest you that जितनी भी co-curricular activities चल रही है, जहाँ पे भी आपको leadership लेने का मौका मिल रहा है, wherever you're getting the opportunities to manage the things, wherever you're getting opportunities to interact with people, to make a network, don't miss on them. They will come handy when you will be preparing for UPSC, especially the personality test part. So the 4 years of college, I would suggest you don't compromise on your graduation because of UPSC. UPSC is just an exam. Recently, when I visited Delhi, one student came to me and he asked, "Sir, one thing you would like to, teach. You would like to tell the aspirants when they start the preparation." And that thing which I said was that UPSC is just an exam. It's not life. Okay, take it as an exam. It will drain you out. You have to work hard for it, but don't make it a question of life and death. Life has so many options available. It's just an exam, and take it as an exam which can be cleared, and which, if sufficient hard work is done, I guess everybody can clear that exam. So that's where this part comes into picture. So that's where I would suggest you that शुरुआत के 3 साल try to explore the options. शुरुआत के 3 साल try to make your mind, try to groom your personality, which will suit in your profession. And when you're in final year, if you have time and if you're determined that okay, I want to do it, start with the basic preparation of reading newspaper as well as reading NCRTs. Once you are done with the NCRTs, then you can shift to advanced books. So suddenly apart from this, another question which comes is कि फाइनल ईयर के बाद तुरंत एग्जाम दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. Some people think that okay, एक बार देख के देते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, how, let's feel it. I don't believe in that ideology. Once you know that you are not supposed to, or you are not going to clear the exam, you should not attempt it, because it will maybe demotivate you,
and you won't have the charm of giving your first attempt with complete confidence and preparation. So if you're not well prepared, you should not attempt in the final year. You take a 1 year time period for preparation, make yourself completely prepared, and then enter into the field. That's where it comes that जब भी किसी युद्ध में जाना हो तो पूरे तैयारी के साथ जाना चाहिए. That's where I would suggest you कि go for the exam after final year only and only if you are prepared 100%. So that's where probably I have answered your questions of during the college field, right? Apart from that, the what the professor asked me to mention and to stress on is number of attempts and people getting demotivated. See, it's a journey. You will have to understand one thing, that uh, it's it's a process. Okay, start enjoying the process. In the journey of UPSC, every day you learn something new. You make yourself enriched with new knowledge, new fundas, and probably I can assure you that even if you can't clear UPSC, but if you have prepared for UPSC dedicatedly, whatever the field you will join, you will shine different. You will stand different. You will stand taller than others because you know something on everything, right? And that's what UPSC prepares you for. So maybe there are number of examples जिनका second attempt में हुआ है, third attempt में हुआ है, fifth attempt में हुआ है, sixth attempt में हुआ है, but वो sixth attempt में हो पाया because they continued for 5 attempts, right? So किसी का first में हो जाता है, किसी का fifth में हो जाता है, तो fifth वाला is never ever you should consider that he is lesser deserving or intelligent than the one who have cleared in the first attempt. Probably जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है उसके फंडास क्लियर थे, उसके आइडियाज क्लियर थे, एंड he or she might have got that kind of mentors in the first attempt only so that they can clear. But some people might not be lucky to understand the exam or the nature of exam. So some people say that first attempt mein you understand what is prelims, and then second mein you understand what is mains, and then you understand what is interview, and fourth या fifth attempt mein hota hai. It's not like that. If you will start putting effort, you will understand that prelims, mains and interview जिस तरीके से अरेंज किए गए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर ये फंडाज आपके दिमाग में क्लियर है, तो आई गेस फर्स्ट या सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट शुड बी द मैक्सिमम. But that doesn't mean that you will start losing your confidence. What happens is once you cross the second or third attempt, people will come to you saying that क्या हुआ, नहीं हो रहा है, उसका फर्स्ट में हो गया, इसका सेकंड में हो गया. You have to face that. You will have to face that with the expectation and hope. Then when you will clear the exam, those people will be standing there to congratulate as well. They will be feeling that okay, यही you will feel कि यही लोग थे जो आपको बोल रहे थे कि नहीं होगा तुमसे, यही लोग आपको congratulations करेंगे. That is what this exam gives you. It turns your life 180 degree. So you make a list. What if you clear the exam, and what if you can't clear the exam? And when you are preparing, whenever you feel disappointed, when you are feel less confident, whenever you feel कि होगा कि नहीं होगा, just go through that particular list. कि if you clear, what is the achievement? If you want clear, what are the things you will face? The things which you will face will make you again work hard for the exam. So that's how you keep yourself continuously motivating. Apart from that, there are some things which I would like to focus is that meditation and discussion will help throughout the preparation. So meditation will give you that clarity in life. Meditation will help you to keep yourself composed, to keep yourself prepared. And not discussion. I'm not in favor of group discussions and all which the aspirants do while they're preparing, but discussion with some of good friends, 2 or 3 friends who will always tell you that yeah, you can do it. No matter what the circumstances are, we have the confidence on you and we know that you will do it. That will keep you going. You should have 2 3 people around you who will believe in your dreams, who will if you will be distracted, who will tell you that okay, this is not the way, this is the way you should go. And that's where the situation will I guess help you. Apart from that, the biggest challenge for the aspirants would be the patience level. You
have one long year of preparation, and then you appear for prelims and then mains and interview and all throughout this journey, how to keep yourself survive, how to keep going. So first thing which will help is your conviction, with which I started the talk, that why you want to join civil services should be very clear, right? Second thing is your passion, why passion for working for the country. Third thing is such kind of friends around you, and fourth thing is your mental peace. These are the things which will keep you motivating and which will keep you going throughout this journey. So probably we are about to reach to the end of this lecture by 2030. So we have 20 minutes left. So I would suggest you that if you can put a questions to me, I think we can make this talk more relatable and more relevant for everybody. So I'm just opening the chat box. If I want to crack UPSC, CSC just in final year itself, should we prepare for it in college? Sir, Probably I have yeah, given yeah. the answer. For it in the college, yeah. Yes. Yeah. I probably I have You start answered preparing that during college, question. sir. Yes, yes, yes. So I would just encourage participants to put their questions in the chat box. Let's also make sure that let's not keep it limited to only civil services. If you want me to answer something about engineering, something about life, something about issues faced by younger generations, I would be more than happy to interact with on that also. Okay. Note making and approach to previous year papers. So previous year papers will help you to understand. I would suggest you to keep a book. There are so many publications who have given the books की previous years में topic wise questions कहाँ से आए थे और क्या आए थे. So when you have those kind of questions with you handy, whenever you start a new topic, just go through those questions once so that you will be able to understand कि किस एंगल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. And when you approach the topic, make sure that you also approach from the examiner's point of view कि इसमें से कौन से questions बना सकते हैं, कैसे questions आ सकते हैं, and try to read that particular topic based on those questions which you have referred. So there are some aspirants who will try to attempt to answer those questions in the beginning. I would suggest you to restrain, because UPSC is a kind of exam which even the history question will have the angles of economics, geography, polity, and art and culture point of view. So unless and until you are not thorough with all the subjects, I would suggest you not to attempt to write the answers. Once you are done with all the basic subjects, then only you start writing answers. Apart from that, one major mistake which aspirants do is writing an essay also. They start writing with the preparation, when they start the preparation. You are supposed to write 1,000 words on one particular topic. How will be able to write a good essay unless and until you are not well aware about the subjects which you are going to study? So I would suggest you that finish the entire syllabus twice or thrice, have an understanding, try to interlink the things, and then after interlinking only, you should start attempting to write the answers and essay. If you start from the beginning, it will demotivate you yourself. You will find that my quality of answers are not good, it's not up to the level, and it will nothing but disappoint you. So better to prepare 2-3 times all the subjects and then go for the answer writing part. More questions I'm getting is, sir, you have mentioned in one of your interviews that you didn't prefer Lakshmikant, then what should we prepare for quality? And do we need to go for a coaching or dedicated self-study? Okay. So I'll address the first part, that I didn't prefer Lakshmikant because when I read 2 or 3 chapters, I felt that okay, this is not the book which will cater to my demand of mains exam, which demands a basic understanding of the subject. It's more on factual and not on analytical part. So that's why I discarded that book and I prepared from Yellow Book of Vajiram, and my class is in Vajiram. So that's where you have to make a choice. There are 90% of the toppers who have prepared for from Lakshmikant. So I would not say that Lakshmikant is not a good book. Definitely, many aspirants have referred to it. So you can also refer to it. But I preferred this one, Yellow Book of Vajiram, and my class notes. That helped me a lot.
So again, it comes individual on the individual level. Regarding coaching and dedicated self-study, I have already told you. I suggest you, if you're financially capable, you can afford that, and you want the environment around you all filled up with civil services, Jill, you can go for the league or coaching institution. Otherwise, self-study is enough. And how to develop that analytical skill that UPSC demands. For that, you need to understand the skills जो UPSC demand करती है. You have to analyze the question from multi aspects. So, anywhere you encounter any question, try to analyze from history, geography, economic, societal, cultural, religious, social point of view that इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. Any issue which is going on around in the newspaper, maybe a political issue or societal issue, try to understand the root, try to understand why that issue has, served up, why that issue is being, tackled in this way and not in that way. What are the stakes involved? What are the, stakeholders involved? And that will, build up that analytical skill in you. Yearbook, monthly magazines, or making notes. I would suggest you to go for a monthly magazine, because when you read the daily newspaper and if you start making notes, it will take too much of efforts and too much of time. When the coaching institutions are doing the work of making notes and compiling all the important news items, I think you better take advantage of that. I hope I have answered your questions, Ms. Pragati. Any advice would you like to give to make your answer more attractive? I would suggest you don't go for the attraction part. Make your answer more relevant in the sense that try to read the questions twice or thrice. Underline the important points which the question is highlighting. What are the demands of the question? And try to hit the bull from the first statement itself. If you start beating around the bush, the examiner has that idea that, okay, this person is not probably well aware about the content. I can guarantee you out of 20 questions, you will be able to write 6 or 7 questions much confidently. Rather, in 13 questions, you will have to beat around the bush for sure. But make sure that you begin in such a way that the examiner get that sense that, okay, this person knows what he's writing. So your introduction should be very catchy. And at the same time very relevant, right? Second thing, people have that confusion of making graphs, making maps and everything, highlighting, underlining and all stuff. If you have time, you can do it. Otherwise, I don't feel that it will make anything you know uh, any substantial impact on that. So if the question is demanding, go for it. If it doesn't demand and you feel that you confidently can explain it, go for it. कुछ लोग ये पूछेंगे कि बुलेट्स में लिखना चाहिए, पैराग्राफ में लिखना चाहिए. That question itself will, answer you. Analyst लिखा है तो just मुँह का, bullet points. Discuss लिखा है तो you better, write in paragraph form. So they are the basic things which I guess with practice you'll be able to understand what is the demand of the question and what to write. I hope I have answered your question, Raksha. If you don't have any friend circle having same UPSC, how should we analyze our question? How to keep oneself motivated during question and avoid frustration? You get frustrated because you set very One high more question targets has come up. How to keep motivated during the preparations and avoid first? Yes. How to keep oneself motivated during the preparation preparation and avoid frustration. Yes. So you get frustrated because what I feel is that you keep very high target for yourself, in the sense that sometimes probably impractical targets. इतना पढ़ना है, इतना करना है, and then suddenly something comes up and you have to leave it, and then you have to again start the things, and you feel frustrated because your entire plan has been destroyed or damaged. So that's where you have to keep again that uncertainty picture in your mind. That okay, there might be some emergency situations. Some people are working and they're preparing. They get more frustrated.
What I used to get frustrated with was this thing only, that I was not sometimes able to follow my timetable. So when you are making or preparing your timetable, have that flexibility for unforeseen circumstances and situations, that if this something happens, still then you can finish your daily targets. uh, Initially I would suggest you that set a low target than your actual potential. When you will finish that target, you will have that sense of achievement. You'll feel more confident. So initially, if you know that you will be able to finish 3 chapters or 4 chapters, try to put a goal for 3 chapters only, right? Once you will finish 3 chapters and you will read one more chapter extra, you'll have that sense of fulfillment and achievement, so that next day again you will continue by yourself. But if you know that you have potential to read 4 chapters a day, and you will set 6 chapters, and anyway you would not be able to finish another two, you will not have that uh, confidence as well as that incentive to go for the reading next day. So that's where choose a lower target initial days, try to achieve that, try to overachieve that, and then set up potential target for that thing. That's the first thing. Second thing, we get frustrated because of our thinkings, in the sense that sometimes we waste our time thinking that अगर होगा नहीं होगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा. Don't give a damn to things which are not in your control. होगा नहीं होगा, that's not in my control. What is in my control is that आज का मेरा target पूरा करना है, and anyhow I'll finish that. That is in my hand, and I should worry about that thing only, right? So with the thought process which you develop during the preparation also plays a major role in this thing. Third thing to avoid frustration you can do is take a break every 15 or 20 days. Give a break to yourself. If you've achieved your target, give a treat to yourself. Go for some good shopping or eating something which is your favorite thing, or on a walk, or somewhere watching a movie. So giving yourself a break after every 15 or 20 days actually frees you from that monotonous schedule, right? And that monotony actually sometimes result into frustration. So this will not happen. Apart from that, for avoiding the frustration, you should also have some good friends, which I already mentioned, to talk something about. These things will keep you motivating. And if you don't have a friend circle, it's a time for online things. You can always make a Telegram group, or you can join some Telegram channel where people are preparing and they are discussing. There are a number of Telegram channels and groups available where aspirants are connected, so you can join them. Sir, so thank you very much for your nice deliberations. Sir, you wait for a few minutes because we want to honor you by way of memento. Shortly, you'll be coming on the screen. You have covered various aspects, Sure. but how to, enter these examinations is one of the toughest examination, but still, person like you, they crack it in the first attempt. So the message to our participant is also that they should copy you, your role model, role symbol for them. Last message which I would like to give to all the participants is that this is not an inspiration. Me clearing UPSC or somebody else clearing UPSC is not the inspiration. What the real inspiration would be, that once you clear the UPSC or you join the service, make sure that problems which you have faced, try to minimize them for others. That would be the real inspiration for other people, right? अगर मैंने किया तो आपको करना है, that is not something which I would tell you. आप भी कर सकते हैं, you will do, but आप जब करेंगे उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की है वो दूसरे कैसे फेस ना करें, इसमें सोचना और इस पे काम करना, that would be a real task, and that's where you will become inspiration for others. And last line which I would like to conclude with is don't go with the flow, be the flow. Thanks, sir. Thanks a lot. So this memento is coming. Yeah.
Wow. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you to everybody for this wonderful moment. Yes. Yeah. Yes. Thank you. It is the answer. Yes. A memento for our love Thank and you so much. Thank you. respect and remembrance to you. Yes. G. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay. Thank you. Yes. Participants, all sessions for these workshops are over. Now we are shortly going for validity sessions. Our Honorable Vice Chancellor sir will be joining. So this session, these workshops on higher study opportunities for technical students say close today. All stands, and now our validity sessions will start. In the validity sessions, our chief guest is Honorable our Vice Chancellor sir, and very highly competent IPS officers, Madam T. Chandra, and senior officials from Rajasthan Technical Universities will be there. During this 5 days workshop, we have all experts from the bureaucrats, IAS, IPS officers, and academicians, and people from industry. They have a lot of informations about the scope, opportunities, avenues which are available for technical students within India or outside the Indias. What type of technology pedagogy goes in other countries, and most important to our students is how they can appear for various government jobs. There are a lot of opportunities for government jobs, and most of our experts, they have nicely explained how they should go for preparations. Now our last speakers, Hassan Safin, was well covered and has given very good tips for preparations for civil services. Before that, we heard Commissioner Rajdeep, Mr. Sandeep Joshi. They all have given very strong tips to all of us, certain guidelines, certain frameworks, certain mental preparations for preparing for the various job opportunities which are available within the countries. And say Mr. Wale, he talked a lot. What are the benefits? He is now presently in Toronto, Canada. What are the various benefits of his education, and what are the various career opportunities for studying abroad? What is the, methodology they apply in the teachings? What type of environment prevails in the higher education abroad? There also our students can get a idea, and holding this opinion that is one certificate course or diploma course, our students, they must undergo from some foreign university so that they get an outside exposure. So this Verma from MNT Bhopal, he higher education India, he opens various opportunities which are available for our graduate students for higher studies within the countries.
Yes. But my dear of workshops, duties and responsibility on your parts, so that we take care of our students and open their mental blocks for preparations of various competitive examinations. So ultimately, we as the faculty becomes a responsibility after undergoing such type of programs. And more important, these experts, their contact number, email addresses, LinkedIn numbers, so that in case of any difficulties where the students can find, our students find some difficulty, they can take some guidance from these experts. Sir, good afternoon. Sir, good afternoon. या गुड आफ्टरनून राठी जी। Welcome, yes, sir. आप शुरू कर रहे हैं क्या? Thank you. Yes. टाइम लगेगा अभी 5 मिनट का। नमस्कार सर। या आई एम वेरी मच हियर। नमस्कार सर, बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका सर। थैंक यू। माथुर साहब भी आ गए। माथुर साहब, आप कब गए जयपुर? Sir, now we can proceed. नमस्कार माथुर साहब। नमस्कार माथुर साहब। माथुर साहब, कोई छुट्टी की लीव तो आई नहीं है? Can we proceed? माइक म्यूट है आपका। नमस्कार सर। सर मैं घर पे यूज नहीं हूँ, फोटा यूज है। शुरू कर प्रारंभ। हाँ, शुरू करिए। राठी साहब शुरू करिए। Sir. राठी साहब Yes. Sir, over to you. Me? Sir, I invite you to welcome the dignitaries. Yes. Okay. बहुत I have already invited, yes, sir, प्रोफेसर to welcome the dignitaries. प्रोफेसर राठी साहब। यस सर, आज पुनः एक सुअवसर मिला है शंकरा परिवार को, जबकि हम सम्माननीय सभी अतिथि का स्वागत करें। मेरा सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर आर.ए. गुप्ता जी आज मुख्य अतिथि के रूप में इस वैलिडेटरी सेशन में पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आपके कुलपति रहते हुए आज जितने भी संबंधित कॉलेज हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं, आज वो कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, जिसका फल हमको सामने में दिख रहा है कि इतने सारे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। आज भी हायर स्टडी अपॉर्चुनिटीज इन टेक्निकल स्टूडेंट्स फॉर टेक्निकल स्टूडेंट का आयोजन हुआ। देश के बड़े ही नामी गामी सभी
हमारे वक्तागण आए, खास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री हुकुम सिंह मीना जी आए, पल्लवी चौधरी जी आई, अरविंद कुमार आए, दिव्या चतुर्वेदी आए, टिकेंद्र नाथ वर्मा जी आए, हिमांशु सिंगला जी आए, सुभाष पोले जी आए, सिमरन स्वामी जी आए, संतोष शाह आए, संदीप जोशी जी, राजेंद्र चौधरी जी जो भारतीय ये IRS है, सफीन हसन मुस्तफली जो IPS अधिकारी हैं गुजरात कैडर के। आप सभी की जो प्रस्तुति हुई है वो बहुत ही अविस्मरणीय रहेगा। आज इस समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रीति चंद्रा मैडम जो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और अभी फिलहाल हमारे बीकानेर की सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। आपकी रुचि पढ़ने में अत्यधिक रहा है। आप यहाँ उपस्थित हुई हैं। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन 5 दिनों में आप लोगों की उपस्थिति बराबर रहा है। इस तरह के आयोजन कभी भी होता है, हम आभार व्यक्त करते हैं डीन फैकल्टी RTU डॉक्टर अनिल माथुर जी का, और इस वैकेटरी सेशन में स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर धीरेन्द्र माथुर जी का, जिन्होंने इस तरह का आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया है। शंकरा परिवार के सभी सदस्यों को हर समय वो प्रोत्साहित करते रहते हैं और इस तरह का आयोजन का जो हमें सुअवसर दिया है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं अभी उपस्थित शंकरा परिवार के सभी प्रधानाचार्य, डीन, डायरेक्टर, निदेशक, सभी शिक्षकगण और इसके जितने भी सहभागी हैं सबका आज में आप सब यहाँ पर आकर के मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ और आशा करता हूँ कि शंकरा परिवार इस तरह का आयोजन जब भी कभी तो आप लोग का इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा। इस आयोजन के लिए एक बार पुनः मैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के सभी कोऑर्डिनेटर, वहां के सभी जितने भी अध्यापकगण प्राध्यापकगण हैं जिनका सपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला है, शंकरा समूह के सभी प्राध्यापकगण को जिनका कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट मिला है, सबका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए अतिथि का 2-2 मिनट का आशीर्वचन सुनने की इच्छा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request Professor Dhirendra Mathur, who is the pillar of all these programs and activity, to speak a few words on the ceremony. Professor Dhirendra Mathur ji. नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। नमस्कार जी। और आज इस वैलिडिक्टरी में जुड़ करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय महोदय प्रोफेसर आर्य गुप्ता साहब, स्पेशल गेस्ट मैडम प्रीति चंद्रा मैडम IPS, और सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारी जो इस FDP प्रोग्राम से जुड़े हैं, और हमारे RTU के वरिष्ठ प्रोफेसरगण, डॉक्टर संत कुमार जी चेयरमैन शंकरा ग्रुप, रणबीर जी राठी जी, और सभी RTU सभी शंकरा के प्रोफेसर्स एंड स्टाफ और एंड पार्टिसिपेंट्स। ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम मुझे लग रहा है कि हमने जो इतने सारे FDP प्रोग्राम्स किए उससे एक तरीके से ये एक अलग सा FDP रहा, जिसके अंदर हमने किस तरीके से हायर एजुकेशन में बच्चों को लाने के लिए कैसे बढ़ावा मिले, कैसे अवसर मिले, उसके ऊपर चर्चाएं की। तो टेक्निकल से हट करके ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि हमारा जो GER है, एनरोलमेंट रेशियो, वो काफ़ी कम है।
अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अब आने वाले समय में ये हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के जो नई नई टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है, डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये रेशियो आने वाले दिनों में बढ़ेगा और काफ़ी जो लोग सोचते हैं कि वो लोग जॉब के साथ साथ अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करें, पढ़ाई करें, उनको ये अवसर मिलेंगे। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी एमिनेंट स्पीकर जुड़े हैं, उन्होंने काफ़ी अपने एक्सपीरियंसेस और काफ़ी इसमें जो डायरेक्शंस आने वाली है उस पर चर्चाएं की होंगी और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को उसका काफ़ी लाभ मिला होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और हालांकि मैं 5 दिन तो नहीं जुड़ पाया था, मुझे आज ही अवसर मिला बात करने का, लेकिन उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एस शंकरा ग्रुप को और हमारे RTU के कोऑर्डिनेटर्स सभी को कि उन्होंने एक अच्छे टॉपिक के ऊपर मंथन किया और टेक्यूब के अंतर्गत ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। राठी Thanks जी, a lot, थैंक यू sir, वेरी मच। for your brief words. Sir, thank you. Thanks, sir. Sir, and now I invite Professor Anil Mathurji to speak very in brief and to highlight about this workshop that stands concluded today. Over to Professor Anil K. Mathurji. सभी को मेरा नमस्कार। शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नमस्ते सबको मेरा। शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वन डे वर्कशॉप हायर स्टडीज अपॉर्चुनिटीज इन टेक्निकल एजुकेशन सर में उपस्थित। सर हाँ ये सर, 1 डे नहीं है, 5 डेज था। 5 डेज 5 था, डेज आज हाँ, वैलिडेटरी है। वही 5 डेज वही देख रहा हूँ सर, वही देख रहा हूँ सर। 5 डे मेरे पास वो आपका ब्रोशर पड़ा है, वो 5 दिन की ये जो वर्कशॉप आई थी 2 मार्च से 6 मार्च तक, उसमें उपस्थित सभी एक्सपर्ट, सभी चीफ गेस्ट, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज के इस वैलिडिक्टरी सेरेमनी में सबसे पहले हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर आर्य गुप्ता साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के वो मुख्य अतिथि हैं और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं और उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में टेक्यूब का एक प्रोग्राम, भारत सरकार के टेक्यूब का 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, एक ATU के लिए, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी के लिए, और एक हमारी कॉलेज के लिए। तो ये जो एफिलेटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है, इसके कोऑर्डिनेटर धीरेन्द्र माथुर जी इस समारोह में उपस्थित हैं और उन्हीं के प्रयासों से और VC साहब के मार्गदर्शन से हम लगभग 300 से ज्यादा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा चुके हैं। कई सारी हैकाथॉन हमने RTU के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इसमें करवाई है। इसके अलावा अभी मार्च महीने में भी हम 2-3 कॉलेज में हैकाथॉन और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। उसमें शंकरा इंस्टीट्यूट में भी एक हैकाथॉन आयोजित की जा रही है, जिसके लिए जैसा पिछले इसके इनॉग्रेशनल प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम में संत कुमार चौधरी साहब ने बताया था कि उसके उद्घाटन के लिए राजस्थान के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्रा जी उसका उद्घाटन करने पधारेंगे। तो ये शंकरा इंस्टीट्यूट के लिए और RTU के लिए, दोनों के लिए एक हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय इस तरीके के कार्यक्रम में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और टेक्निकल एजुकेशन और RTU और शंकरा इंस्टीट्यूट को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और वो इस कार्यक्रम में पधार के हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैडम प्रीति चंद्रा जी, जो बीकानेर में IPS अधिकारी हैं, पुलिस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा शंकरा इंस्टीट्यूट के राठी साहब, पुट्टी जी, आशुतोष मिश्रा जी और हमारे RTU के टेक्निकल कोऑर्डिनेटर धीरेन्द्र माथुर साहब, इस प्रोग्राम के संयोजक RTU के डॉक्टर SS गोदारा व अन्य सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। उनको बधाई देता हूं कि उनको ये मौका मिला कि इस तरीके के प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 5 दिन में, जैसा कि चौधरी साहब ने बताया था, विभिन्न क्षेत्रों से
कई सारे एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारत सरकार के आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और दूसरे फील्ड के लोग उपस्थित रहे और उन्होंने अपना ज्ञान जो है वो इसके पार्टिसिपेंट्स को बताया। निश्चित रूप से जैसे अभी कोरोना के बाद से थोड़ा प्लेसमेंट में संकट आ रहा है, धीरे धीरे कुछ प्लेसमेंट कम भी हो रहा था, तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स ने छात्रों को इसके बारे में बताया होगा कि वो हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है उनकी, उसमें उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं भी पूरा प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाया, पर अभी मैंने 2 बजे जब ज्वाइन किया था तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी साफिन हसन जी का लेक्चर या इंटरेक्शन छात्रों से चल रहा था। लगभग आधे घंटे मैंने वो उनका इंटरेक्शन देखा, जिस हिसाब से पार्टिसिपेंट्स ने उनसे क्वेश्चन किए और जिस हिसाब से उन्होंने उस पार्टिसिपेंट्स को उनके आंसर्स दिए, मुझे लगा निश्चित रूप से ये एक सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा है, जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स की क्वेरी और एक्सपर्ट्स ने अपने विचारों से सभी को लाभान्वित किया। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से और कार्यक्रम जो है वो हमारे टेक्यूब के अंतर्गत या अदरवाइज भी शंकरा कॉलेज और बाकी कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स भी अगर प्रेजेंट हैं तो वो करवाएंगे इस तरीके के कार्यक्रम। और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं संत कुमार चौधरी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि लगभग पिछले 15 सालों से शंकरा इंस्टीट्यूट में जो भी प्रोग्राम हुआ है उसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला है। और मैंने देखा है कि दिनों दिन जो है 2006 में जो कॉलेज था उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसके लिए मैं शंकरा इंस्टीट्यूट के चेयरमैन चौधरी साहब को और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। और अंत में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों और पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Sir, Chairman, sir, Madam has not come so far. I think we can proceed further. Now she has joined, I think. Can you request her to speak? And Sir, if she is not there, then we can request Honorable Vice Chancellor, sir. Think she is not appearing in my Yeah, online good screen, afternoon. sir. Good afternoon. She has not joined so far. Chaudhary sahab. I have joined. Because sir I has, have joined only and listening all the speakers. I am in the group. I'm here. yes. Madam, you are requested Okay, madam. give Welcome you word as a to. blessing. Now we with us. I think now I am visible. Your video is not on. You are not visible. Audible. You are audible but not visible. Not yeah, but Namaskar, sir. Namaskar. Now, our humble request to give your few words as a blessing to our all participants, and our honorable chief guest is here. Other distinguished guests are there, so I'm requesting you to deliver your few words. Thank you, sir. Respected sir, Vice Chancellor, sir, Mathur, sir. I just want to say a few words regarding the program. As I have joined recently to this WebEx seminar, sir, जो जिस तरह का एक ही आयोजन तरह का एक प्लेटफॉर्म है ये कि थ्रू इस तरह के वर्चुअल सेमिनार्स उनको जो इनपुट्स और उन बच्चों के लिए जो आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो उनको आप एक बता रहे हैं कि उनको क्या किस तरह का आगे परस्यू करना चाहिए, किस तरह से कौन सी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होंगी, कौन सी चीज़ें हैं जो उनको करियर में आगे इम्पोर्टेंस रखेंगी। ये क्योंकि मैं जब स्टूडेंट थी तो हमारे लिए इस तरह की काउंसलिंग सेशंस या इस तरह के लोगों के माध्यम से ये चीज़ें जानकारी में आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। बहुत कम ऐसा होता था कि हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ पर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराए जाएं कि हमारे फ्यूचर को लेकर के इस तरह के सेमिनार्स करे जाएं कि हमें उसको आगे जाके फ़ायदा मिले। तो इस तरह के जो सर आप ये कि मैं आपके लगातार कांटेक्ट में रहती हूँ और आप मुझे बताते रहते हैं, मैं आपसे पूछती रहती हूँ कि सर नया क्या कर रहे हैं। तो लगातार जो आप अपने इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जो आपका है, जो बच्चे दूर दूर से आपके यहाँ आते हैं उनको जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से थैंक यू उन बच्चों की तरफ से, क्योंकि मैं पास में जब देखती हूँ तो उन्हीं के बीच में अपने आप को बैठा हुआ देखती हूँ। तो ये आप उनके भविष्य के लिए जो व्यवस्था दे रहे हैं, काबिले तारीफ है सर। आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं या मैनेजमेंट जो एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं, एक कॉमन सा उन बच्चों को लेके एक सोच रहती है कि वो आफ्टर देयर ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, और उनका जो टेक्निकल जो इनपुट है, क्योंकि टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको जल्दी प्लेसमेंट मिल जाता है। हायर एजुकेशन को लेकर के उन बच्चों को आगे क्या क्या उन बच्चों को उनके लिए प्रोस्पेक्ट्स हैं, कहाँ वो जा सकते हैं, और उस एजुकेशन के बाद उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसको लेकर के सर ये जो आज का आपने कार्यक्रम रखा और जो आज समापन की तरफ है, उसमें सर मैं यही कहना चाहूँगी कि हायर एजुकेशन अपने आप में ना केवल एक पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट का काम करता है, बल्कि उन बच्चों को एक सॉलिड एक सुसंगठित एक भविष्य की ओर लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन के बाद ही यूपीएससी के रास्ते खुलते हैं। यूपीएससी हमारे देश के टॉप जो सर्विसेज हैं उनमें वो बच्चे जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के बाद वो बच्चे, जैसे वीसी सर बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, उनका रास्ता हायर एजुकेशन के बाद ही टीचिंग की तरफ निकलता है, तभी वो उधर जा पाएंगे। हायर एजुकेशन की इतनी प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज हैं, जो स्कोप हमारा ग्रेजुएशन तक 50% रहता है, वो हायर एजुकेशन के बाद इन्हेंस होकर हम 89% तक हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। और सर जब हम लोग अपना एज स्टूडेंट जब हम अपना करियर बना रहे होते हैं, तो हम कई सारे विकल्प सामने लेके चलते हैं, क्योंकि वो जॉब कहीं से भी हासिल करना खुद के हाथ में नहीं है। यू आर नॉट ए एम्प्लॉयर। जो बच्चा पढ़ता है उसको कई तरह से उसको प्लेसमेंट की जरूरत होती है, तो जितने ज्यादा उसके हाथ में स्कोप होंगे, जितनी ज्यादा चीजें उसके हाथ में विकल्प होंगे, उसका फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा। मैं सर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, सभी सुन रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे, और ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। और सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपका मैनेजमेंट आपके लिए इतना पेन ले रहा है, और लगातार आपके लिए सीरीज ऑफ सेमिनार्स इस तरह की हो रही हैं, जब कोरोना टाइम है और जब गैदरिंग्स पॉसिबल नहीं है, और ऐसे टाइम में आपको ऐसे ऐसे गेस्ट स्पीकर्स आपको सुनने के लिए, आपको बताने के लिए अवेलेबल हो रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू योर मैनेजमेंट। और एंड आई मस्ट से कि आप बहुत लकी हैं, खुशकिस्मत स्टूडेंट्स हैं कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। Thanks, madam. Sir, Honorable Vice Chancellor, sir, before I invite you, I just want to, in 2-3 minutes, I want to just give what has been the learning outcome. I think about background of these workshops, our chairman sirs, Professor Dharendra have already given it. I'm touching those points. I am coming to the main point. Sir, first point is, there is a need for synergy between academia and industry. For this purpose, Professor Hukam Singh Minaji addressed to conduct a survey of the nearby industry and comprehend the industry's requirement for technical human resources in short terms as well as long-term basis. Second, the teaching curriculum may be tailored in the light of industry requirement. One of the spectators also highlighted the frequent interactions with industry people. Next, sir, the teaching should be more library-based study. Habit should be developed among the students so that in library, so that they sit in the. One speaker pointed out that a faculty can give the topic which she intends to deliver in class 2 days in advance with references, so that students will come in the class after going through the topic. Next, quality of research in our country is very poor. One of the speakers remarked that volume of research papers are higher in our country, but in terms of sessions, our country stands at the lowest. So this area also requires a lot of concentration. For pursuing higher study abroad, our students should be excellent in their spoken, reading, writing, and listening skills in English, as they are required to qualify tests like TOEFL and IELTS. Next, sir, one of the speakers also pointed out that students should be exposed at least to one foreign language during his study time, like French, German,
Russian, Chinese, Japanese for better opportunities in these countries. Next important point was our students for competitive examination like civil services, army services, banking service, railway service, economic service, engineering services, etc. Guidance may be provided to our students during their study time. Rather, steps may be taken either at the individual initial or of institutes may come together for preparing the students for this purpose, so that our students they develop interest for pursuing studies. Next was, sir, it has also been inferred that our country is the third largest country after China and US in terms of higher education, but low in terms of gross enrollment ratio, that is only 19%, whereas in China is 43.9% and US it is 85.8%. It shows that our institutions are not in a position to translate the huge population of to college education. This requires also a lot of focus and attention. To conclude, education is a national strength, and therefore higher education for technical graduates should be vibrant, competitive, and purposeful. To all, now I just Honorable Vice Chancellor, Professor R. Gupta ji, to deliver his address. Over to Professor R. Gupta ji. Chairman, sir has gone because he was to attend some meeting. He conveyed, but he is online. He will speak. Just I'll request him. है ना line पे? Yes, sir. Yes. He is online. Yes. Just kindly wait for 1 minute. Because at 3 o'clock he was to online. Yes, so. Yeah, he was supposed Yes. to, because he is the chairman of grievance. Sir, therefore, I hurriedly concluded it. Quickly, I concluded these things because at 3 o'clock to attend some meeting. I also did not touch most of the other points. yeah, within few sec, our honorable chief guest is joining. Within few sec, sir. Okay, sir. या चौधरी साहब, आई एम वेरी सॉरी, मैं क्या है कि AICT की मीटिंग चल रही है मेरी, तो इसलिए मैंने आपसे परमिशन ली थी कि मैं 15 मिनट में आऊंगा, थोड़ा लेट हो गए, तो माफी चाहता हूँ जी, आप अपने आशीर्वचन दे दें। सर मैं एक्चुअली में मैं पूरा सुना मैंने, और बेसिकली मैं यही कह रहा था कि इसमें जो कीवर्ड है वो ये है कि if you want to win the match, then you should know the rules of the game if you want to win the game. ये सभी लोगों ने बताया कि इंडस्ट्री इंटरेक्शन होना चाहिए और हमको बाहर भेजना है, तो कुल मिला के जो कहने का पर्पस वो ये है कि इफ यू वांट टू प्ले द गेम एंड इफ यू वांट टू विन द गेम, तो आपको उसका रूल्स मालूम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब हमारे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको रूल्स मालूम चल गए हैं कि उनको किस तरह से करना चाहिए कि वो बहुत आगे जाएंगे, और उसके लिए ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन, प्लेसमेंट और ये सभी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और सबसे अच्छा तो ये है जो एनकरेजिंग है हमारे लिए कि इस तरह के स्पीकर्स जो डायरेक्टली सोसाइटी को देख भी रहे हैं और उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, उन लोगों को आप यहाँ बुलाते हैं बोलने के लिए, जैसे IPS ऑफिसर्स
एक से एक जो है बेसिकली बढ़ के वो लोग हैं। और आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जब वो बोलते हैं तो एक्चुअली में एक स्पीकर की एक जो टॉक है, जो फील्ड में काम करते हैं, वो एक कंप्लीट बुक हो जाती है एक्चुअली में। इट्स ए कंप्लीट बुक, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंस को कन्वे करना, हम लोग क्या करते हैं क्लास में जो पढ़ाते हैं, दैट इज द बेसिकली नॉलेज का एक वो हम गैदर करते हैं बुक से पढ़ा करके, बहुत सारी नॉलेज पढ़ाते हैं और उस पर फिर केस स्टडी करते हैं, तब कहीं जाकर के एक स्टूडेंट को रियल टाइम क्या हो रहा है पता लगता है। तो जब आप इन लोगों को सीधे बुलाते हैं तो इनका 1 घंटे का टॉक मीन्स एक किताब, वन बुक कंप्लीट हो जाती है। दे आर फेसिंग एंड दे आर डूइंग एवरी डे किस तरीके से। तो इस तरह के स्पीकर जब यहाँ आते हैं तो कोई वजह नहीं है कि सोसाइटी को सीधा मैसेज आ रहा है, स्टूडेंट की डायरेक्ट लर्निंग हो रही है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू दिस शंकरा इंस्टीट्यूट कि आप बहुत गजब काम करते हैं, कमाल का काम करते हैं। प्रीति मैडम ने भी बोला यहाँ पे कि स्पीकर्स को वहां से लेके आते हैं जहां सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, तो सीधी इंफॉर्मेशन लोगों को जा रही है। तो अगर आपने 5 टॉक कराई मतलब आपने 5 किताब पूरी कंप्लीट ए से लेके जेड तक 500 पेज की एक किताब आपने जो है डिलीवर कर दी। और आपको बताऊं चौधरी साहब, 3 घंटे की जो मूवी होती है उसमें बचपन से लेकर के और पिछली पीढ़ी से लेकर अगली पीढ़ी तक दिखा देते हैं और सब याद हो जाता है। तो ये जो स्पीकर्स हैं जो बोलते हैं तो पूरी सोसाइटी की लर्निंग एक साथ हो जाती है, बिकॉज ये बिल्कुल डायरेक्टली एक्सपीरियंस है जो कि सीधा एक मूवी की तरह दिमाग में जाता है। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट। और स्पेशली मैं हमारे आरटीयू के जो प्रोफेसर्स हैं, धीरेन्द्र माथुर हैं, अनिल माथुर हैं, मैं इनको भी उतना ही बधाई देना चाहता हूँ, इनको भी उतना ही बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि ये लोग भी इसी लेवल पे काम कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है चौधरी साहब की मैच्योरिटी उस लेवल पे आ गई है कि इंस्टीट्यूट जो है अब आरटीयू के बराबर खड़ा हो गया है। आप तो कहावत कहते हैं ना कि बच्चा अगर उसके जूते आने लगे फादर के बराबर हो जाते हैं वो, तो हमारी एफिलिएटेड कॉलेजेस आर नॉट लेस देन आरटीयू, उसी लेवल पे काम कर रही है। तो आप देखिए कि बहुत फास्ट प्रोग्रेस अब सिस्टम की होने वाली है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली जो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं तो ये नेचुरल बम्बार्डिंग होती है, एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है चौधरी साहब, ये फिनोमिना है कि एक लेवल तक हम लोग काम करते हैं और उसके बाद जैसे एवलांच ब्रेकडाउन होता है एकदम नॉलेज स्प्रेड हो जाती है। तो अब क्या हुआ कि हम वहां पहुंच गए कि एवलांच ब्रेकडाउन होने वाला है, तो सब लोगों की नॉलेज एक साथ आने वाली है और सभी लोगों का इसमें बहुत एडवांटेज होने वाला है। इंडस्ट्री के साथ हमारा जो इंटरेक्शन चल रहा है, प्लेसमेंट हम बढ़ाएंगे, एडमिशंस बढ़ेगा और इस तरह के स्पीकर्स के आने से सारी बाउंड्रीज ब्रेक हो गई हैं। आज आईपीएस क्या कर रहे हैं, आईएएस क्या कर रहे हैं, आपने सबको बुलाया है, हमारे मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, तो सबको सबका मालूम चल रहा है। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म दिया है इसमें हमारे जो सोसाइटी को हमारा थैंकफुल होना चाहिए कि हमने आईएएस को, आईपीएस को, मिनिस्टर्स को सबको बता दिया एक दूसरे के बारे में कि कौन क्या कर रहा है हमारे प्लेटफॉर्म से। तो हम तो लिंक करने का काम कर रहे हैं, अब आजकल जोड़ने का काम कर रहे हैं। सो दिस इज आवर पॉजिटिविटी एंड आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट इट। और आगे आने वाले टाइम में भी हम इन सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आते रहेंगे तो हमारे सोसाइटी की मल्टीफोल्ड लर्निंग होती चली जाएगी। मल्टीफोल्ड, एक साथ बहुत सारी लर्निंग, टेक्निकल लर्निंग, सोसाइटी की लर्निंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडस्ट्री लर्निंग, एवरीथिंग वी आर लर्निंग। सो थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, मैं ज्यादा टाइम ले नहीं पाऊंगा, मेरी आईसीटी की मीटिंग चल रही है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड एक्सपर्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Now coming to the next phase of this ceremony, we want to honor our all dignitaries, senior officials with the memento.
हाँ अनाउंस कर दिया, मैंने कर दिया। प्रोफेसर आर ए गुप्ता, ऑनरेबल वाइस चांसलर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। Yes. Now, next, Srimati Preeti Chandra, IPS, Superintendent of Police, Bikaner. Professor Anil K. Mathur, Thank you, sir. Dean Faculty Affairs, Professor Dhirendra Mathur, UKIP Coordinator, RTU Kota. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Yes. Professor S.S. Godra, Professor S.S. Godra. Then Dr. Sant Kumar Chaudhary, Chairman, Shankara Group of Institutions. Now, coming to the last stage of this validity sessions, now I invite Professor Navin Sharma to convey his vote of thanks. Good afternoon, everyone. Honorable Chief Guest, Professor R.A. Gupta, sir, Vice Chancellor, Rajasthan Technical University. Special Guest of Honor, Madam Preeti Chandra, IPS SP Bikaner. Guest of Honor, Professor Anil K. Mathur, Dean Faculty Affairs, RTU Kota. Dr. Dhirendra Mathurji, RTU ATU TQ 3rd Coordinator. S.S. Godara, RTU Coordinator. Chairman, Dr. Sant Kumar Chaudhary, sir. Dr. Rao Chaudhary, sir. Trustee Sankara Group of Institutions. Professor S.N. Kuti, Dean Sankara Group of Institutions. Dr. Asutosh Misra, Principal, Sankara Institute of Technology. Dr. Ranveer Rathi, sir, Director HR, Sankara Group of Institutions. Dr. Sunita Joshi, Principal, Sankara Group of Institutions, Faculty Member and DA Participant. On behalf of SH of the Educational Trust, Sankara Institute of Technology, I feel immense pleasure to vote of thanks. This workshop on higher study opportunity for technical students is a part of TQ 3rd to improve quality of technical education. During this workshop, we got a lesson from eminent and industry. To share with you that we have received very good response from participants for this workshop from different part of country. If you want to win the game, you should know the rules of the game. Very well caught by our honorable VC R.A. Gupta sir. Yes sir, now we are in position, winning position with your kind support and guidance. So I express my sincere thanks to Honorable Vice Chancellor RTU Professor R.A. Gupta sir for giving his precious time in inaugural and valedictory session and blessed us. Sir, you are always giving your kind support, valuable guidance and kind presence in various activities of our institution. Sir, we are looking forward for your blessings and guidance in future also. Thank you very much, sir. I sincerely convey my thanks to Madam Preeti Chandra, IPS SP Bikaner, for sparing her precious time to bless us. Madam, we feel proud and honored
with your kind presence. Your inspiring words will motivate our students to excel in their career. Thank you, madam, for your blessings and kind presence. I express my sincere thanks to Dr. Anil Kumar Mathur, Dean Faculty Affairs, RTU Kota, for his kind presence in the valedictory section of this workshop. Sir, we are continuously getting your support, guidance, and blessings over the years and request the same in future also. Thank you very much, sir. I convey my sincere thanks to Dr. Dhirendra Mathur, sir, RTU-ATU Equipe Third Coordinator, for your support, guidance, and motivation for the successful conduction of this workshop. Thank you, sir, for your kind presence. I express my sincere thanks to all our eminent speakers, Sri Hukum Singh Minaji, IAS Additional Secretary, Government of India, Mr. Rajendra Chaudhary ji, Assistant Commissioner, Ministry of Finance, Government of India, Mr. Safin Hassan, IPS Assistant Superintendent of Police, Bhavnagar, Gujarat, Dr. Palvi Chaudhary, Entrepreneurship Specialist, Dr. Tikendra Nath, Assistant Professor, MA and IT Bhopal, Sri Sandeep Joshi, Assistant Director, Shreyas Healthcare, Chennai. He is from IIM Bangalore. Dr. Arvind Kumar, Assistant Professor, VIT University, Vellore. Dr. Divya Chaturvedi, Assistant Professor, SRM University. Dr. Santosh Shah, Assistant Professor, LMNIT. Dr. Subhas Pol, Business Development Manager at Advice International. Mr. Himanshu Singla, Process Engineer, DBG Canada Limited. Ms. Simran Swami, Career Counselor and Advice International, for sparing your precious time to deliver very nice and very well presented and informative session on higher study opportunity for technical students. The workshop sessions were full of knowledge and interesting things which gave deep insight into the topic and also revealed some interesting facts. I am pretty sure the precious knowledge of our speakers will help the students for pursuing higher education. Thank to all our eminent speakers. I express my sincere thanks to RTU coordinator Sri S.S. Godaraji for his support and guidance at every stage for successful organization of this workshop. Thank you, sir. I convey my sincere thanks to our honorable chairman, Chaudhary sir, for giving the opportunity to conduct this workshop. Without your dynamic leadership and guidance, the successful organization of this workshop was never possible. Thank you very much, sir, for your blessings and guidance. I express sincere thanks to Trustee Sankara Group of Institutions for his technical and operational support. Thank you very much, sir. I convey my sincere thanks to Professor S.N. Kutti, Dean Sankara Group of Institution, for his support, guidance. Thank you, Kutti sir. I express my sincere thanks to Dr. R.S. Rathi sir, Director HR, Sankara Group of Institution, for your coordination, support, and guidance for successful workshop. Thank you, Rathi sir. I convey my sincere thanks to Dr. Asutosh Mishra sir, Principal, Sankara Institute of Technology, for your support and at every stage of this workshop. Thank you, Principal sir. I convey my sincere thanks to Dr. Sunita Joshi, Madam, Principal, Sankara Group of Institutions, for your support and guidance. Thank you very much, ma'am. I'm also thankful to all the academicians and other officials of RTU Kota, faculty and staff members of Sankara Group of Institutions, and all those who supported directly and indirectly for successful conduction of this workshop. I am thankful to all the print and electronic media for the coverage of this workshop. I would also like to congratulate our young and dynamic team of coordinators, Mr. Rajesh Kanwadia, Mr. Sikandar Khan, Madam Smita Agarwal, Madam Jyoti Kurana, Madam Shivangi Chaudhary, for their dedication and hard work for successful organization of various workshops and FDPs in last 1 month. I wish them best of luck for their future assignment. Thank to all the participants for their active participation in all the sessions of this workshop. I am pleased to share with you that from 8th of March to 2021, we are organizing 3 days workshop on employees engagement in IT sector after post COVID-19 scenario, and registration are open for the same. Thank you everyone, and thank you for joining us. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thanks to all. Thanks to one and all. Now, with this vote of thanks, this ceremony stands concluded. Thanks to all.